Hey, good morning, everyone. Good morning, everyone. I was expecting actually other guys over the call. Anyway, so who is from Radical? Hello, who is from? Is this Swapnil? Who is from Radical? Let me ping. Yeah, hi Suruchi. Hi, Anil. Okay, let's wait for Meghna. Okay, and then maybe I will try to give you an overview. Yeah. Okay. Hello, Anil. Pradyum, yeah, Pradyum, tell me. Anil, regarding assignments of last week, Uh-huh. actually for that string assignment, I'm facing issue for split and to care array. We'll discuss. We'll discuss that. We'll discuss. Yes. Okay. Yeah. Hey, hi Meghna and hi Suruchi. Welcome to the group. Yeah. Thank you, Anil. Okay, Meghna, can you hear us? Meghna, can you hear us? Meghna, you are not audible. I see like there is some issue with your headphone. Please correct it. Guys, to be honest, next 40 minutes I'm just gonna talk with Suruchi and Meghna. Okay, you will remain silent observer or listener. The reason is they joined little late, and that's what like I'm just trying to make sure that they understand what's happening.
Okay, so if even if you want to rejoin by 9, that should be okay. If you want, that will remain your choice. Meghna, good morning. I see now you are connected with audio. Hi Anil, hi everyone. Yeah, hi. So again, welcome Meghna to the group. Thank And you. the thing is, Suruchi has also joined from today, and that's why like I postponed the current session of 8:30 to 9, and I would like to hear like what setup that you have done, and like how much syllabus that we have covered, and we'll just try to get settled in, okay, in next 30-40 minutes. Okay, so let's start with Suruchi. So could you please like tell me like in terms of setup, whatever the thing that you have done till date? Anil, I have downloaded JDK 1.8 Perfect. and Eclipse. Okay. That's it. Have you installed it? Yes. Okay, Uh, okay. So uh, are you able to create a project in Eclipse? yes, I tried. I guess one or two programs. Just Okay, I perfect, didn't perfect. get much time. That's fine, that's fine. But at least you have the running setup, right? Yes. Okay, so how about you, Meghna? I installed in Eclipse and Java, but Mhm. that's it. I could not even Okay, try to create project. okay, okay, fine. So let's set up the your project. Okay, Mhm. that's something which we will do immediately, so that at least you will have the infrastructure to write the code. Okay, so let me share my screen. So what you have to do? Uh, mm, mm, mm. Okay, I have shared my entire screen. Let me know if you can see my screen. Yes. Okay, so what we have covered so far, and like how about like practice assignment, we'll talk about that as well. Prior to that, Meghna, so you need to have a new project for Java. So we created this project, Java project, for us. Now you can go ahead and create it as well. In project, you can give some name, logical name like radical. Sorry, yes, let me delete it. It's not logical. This will remain your container to have all the programs that we are going to write. Obviously, we will have this particular project very well organized, so that we can refer those program later on as well. Radical Java batch 24. Okay, so you can check your environment. Okay, so generally we started with 1.8, which is why we are using Java 1.8, because this particular version is being supported by all the tools that we are going to use in future. Okay, so that's what the logic is. You can say like I have Java 70, what is the problem? There would be a backward compatibility, obviously. In terms of Java, that's fine. If you have written a program in Java 1.8, you can run it on Java 17 as well. However, that
backward compatibility is not available with other tools like Selenium, Rest Assured. They are, or they were written on some base Java, which now changed to the latter version. So there is a possibility that some feature might not work. So as per the um, tools standard text setup, okay, so I have not seen all the tools supporting Java 17. Couple of tools supporting Java 11. I would try to move to Java 11 whenever required, and that will be done when we'll reach to that tool. So that's why we decided to go ahead with the Java 1.8. To be honest, even if we are using Java 1.8, we are not using a Java feature of Java 1.1 as well. You know why? Java 1.8, they have a rich feature in terms of networking, web development, and other tools and technology. However, the Java which is required for us as an automation engineer, that will remain a very, very basic Java which was written around 15 years back, to be honest. Okay. So even for us as an automation engineer, we are not using a single feature of Java 1.8, which is actually specifically written in Java 1.8. Okay, we are still using a very old feature or the base feature of core Java. Okay, so that's why I think you can also configure your project setup. ये ऊपर कैसे जाता है यार? Okay. Okay, so you can also configure your project with Java 1.8. In future, we are going to upgrade it. One more thing, can we have multiple Java on your machine? The answer is yes. We can have as many Java installed on your laptop. Now, how particular Java will take effect as a part of your execution? Obviously, that either you need to change here or you need to set the environment variable. First environment variable, if you set the environment variable, that Java will be the default Java will be used by all the programs running on that machine. For Eclipse, we can give the path and configure it. Forget it. We are not worried it. This is a one-time activity. Even in the company, this is a one-time activity. Okay, Java generally changes, means we upgrade in the company environment, we upgrade the Java maybe after a couple of years. So that won't be have any challenge, because ultimately whatever we do today, we are going to forget it. We need to read it again, like how to upgrade Java. That's fine. But we are at this moment, we will go ahead with the 1.8. So that's what like my project setup, basic project setup. Just make sure that you uncheck this module icon. It will just create some info file which I don't want, and click on finish. This will create the container where we are going to write the program. So let's try to understand this container. So this src folder is going to hold all the .java file. When I say .java file, okay, so those are like basic Java code or readable code. So this bin folder is going to store all the compiled code of the files written in src folder. How we'll see that as well. Settings, these are Eclipse specific setting. You delete it, the Eclipse won't work. So that's why like you can't copy paste Eclipse setup from one location to another location. Once it is set, make sure that your all Eclipse setup is at one place only. Do not try to upgrade Eclipse, because that will create, or do not try to move Eclipse folder from one location to another. And the same applicable for the Java folder as well. Okay, so this is container. In your machine, you might have only one container. That's fine. I have multiple project created. So what is the next step actually? So here you can go ahead and create the package. Package is like a folder. Okay, so basics. I'm just creating one basic folder. So this is this is the path of your relative path of your project, and this is folder I'm going to create. I'm trying to guys, I'm trying to explain the very basic thing. The reason is uh, I'm not sure like how basic thing that Okay,
At least you should be in position to write the code today, later on. And class. Okay, so class will remain an entity which holds the code. So maybe let's start with hello Java. Okay, hello Java. I'm just writing. Okay, so I'm just clicking on this checkbox that is main method. What is the use of main method? We'll see that as well. But this is something which is I am pre-populating into the code with the help of Eclipse. I can write all the Java code in Notepad as well. Okay, so I'm just pre-populating. You can see that. Okay, so this particular class has been created. Okay, and this is the method. Java always execute this method. If you don't have main method, Java won't execute any code. So let me. Okay, so I've just written some print statement. I'm just printing out. Okay, so let me give you the shortcut as well. Sys out. This will help you to have the proper syntax for system.out.println. Okay, system.out.println. So sys out and then control space. Where is my sys out? Okay, okay, you can put anything inside the string just to check. This is I'm just making sure that your setup is running. So Java application run as, right click. Okay, so on this particular panel you have to click, right click, I mean run as Java application, and this console will print your all the result. So this is the first thing that Suruchi and Meghna has to do, and let me immediately confirm if you are able to do at least this basic thing. I believe Suruchi already um, did this code run, but would Yes, like to, Anil. yeah, I would like to hear from Meghna. Meghna, you take your time and just try to get one program, basic program running along with the project. If you want, you can share your screen as well. Yes, I'm writing it. So who all are in? Okay. By the way, Radical Technology, it's me actually. I don't know when they put me as a. Okay, they removed my name, it seems to me. Okay. Vikrant, Suruchi. Guys, Rajat, so I'm just covering a very basic thing. Um, because if you have missed something, maybe you can like just cover those things. If you have any doubt, let me know. Rajat, then Jayesh didn't join actually. Meghna and Suruchi. I didn't get that main method automatically. The Okay, this method. so you have not clicked that checkbox then. Okay, so here test, and this is something that you need to checkbox. Okay. Okay, maybe you can create another one more program. No, I just typed it in. Just Otherwise, you can write as well. Yeah. For other guys, it's if it's boring, please start doing some assignment. You joined, I can understand, but I'm not going to teach anything new, and also I'm not going to solve your problem at this moment. so I have written the program. Should I run it? Yeah, run it. If you are able to run, do let me know. Yes. Program running. Mhm. Okay, perfect. So this means that um, your setup is all good, right? Yes.
Okay, fine. So let me go through the syllabus now. What we have covered. Okay, so to be honest, we had 5 sessions. First of all, let me go to the website, Radical website. हाँ, ये नहीं. Like how you can like attend those sessions. Let me give quick overview as well. Okay, so this is our Radical website. Okay, once you log in, you you will see this page, I believe, not this page. Software testing. Okay, so this is the course that we have. You will see only this course in your list, and this is the course. Okay, so uh, here on the front page itself, you will see all the links to the recording. So this is like so this link has gone. No, I don't think gone. Okay, no, it's there. So this was our first session. 7/5. Okay, means around 20 days back. Okay, and last weekend, 13 and 14, and this was the last weekend session. In this session, what we have done, the first session, we just did the Eclipse and Java installation. You both have done the same thing. Then what we were doing in that session for 3 hours, because we have a lot of different machines, so I need to work with each and every individual to make sure that they have the proper setup. That's why it took almost 2.5 to 3 hours to have the basic setup and to understand how to use at least Eclipse. Okay, then here actually we started with, again, not Java specific concept, but programming specific concepts, and those are control flows. When we say control flows, if else, for loop, while loop, do while. Okay, so those basic thing that we have covered. Okay, where is Radical Java? Uh, See, this is the control flows that we have written, and this is the basic thing that we did. Even I have more details here as well. Okay, so control flows and installation. Okay, till second session. Then in the third session, what we did, we tried to understand what is class, what is object, which is actually the Java's core concept. So you can say that like these three session and maybe 3 session, right? These 3 sessions are really important to you considering the Java. So so you still have some time today as well. Okay, just go through it. Okay, though we are going with a very slow pace, but you have to go through these sessions. That's a mandate. Otherwise, you will feel disconnected. How frequently we are going to use that code in automation? Yes, we are going to use that code where we have covered. So let me go by. Okay, so this is introduction of Java. Then what is JDK and JRE? Basics of Java. Okay, so these things we have seen. Then the data types, and from here actually we started the coding. Okay, so what is class? What is object? And these are the control flows which I was talking about: for loop, do while, switch, and if else. Okay, so again, these are like how those flows works. As I understand, Suruchi is already having a computer background, and I believe Meghna as well. So you guys must be aware about like how these loops work. If not, we can revise maybe after the class, today's class. Okay. Then this is something which is little bit specific to the Java, and this was actually the syllabus I was talking about last 3 session. So we tried to understand what is local, instant, and static variable. Then
basics of class, basics of method. Then we try to understand arrays, then importing packages. Okay. Then access specifier. This is what we have studied last Saturday and Sunday. Sunday we we try to cover the constructor. This is the syllabus that we have done. Okay. So obviously, you must be feeling a lot of things has been done, but we spent three session, almost 10 hours to cover the Java specific thing. 10 hours, 3.5 or 3 hours. So you need to take some time today. Okay, maybe we are going to meet after this session as well, and even that session will remain open. If you want to be a listener, observer, you can also join. Anyone can join. Okay, boss. I'm just talking about like covering few things from the missed syllabus for you guys. Okay. And what is the plan for today? Plan for today, either we will start with the next concept of oops, that is encapsulation or inheritance. Okay, so that's what the plan for today. Okay, so I'm sure you might be scared or like worried that a lot of things has been covered, but to be honest, I have covered, if you talk about our entire syllabus from day one to last day in 3 months, I have covered 5% of total syllabus, even less than that, because whatever the things that we learn, that is just a very, very basic thing with respect to the entire automation content. We have a huge automation content, and 5%, total 5% that you need to catch up. Fine. If you have any doubt, any concern, anything you would like to talk, and do not hesitate to share anything, any doubt. Um, if even if your programs are not running, do let me know. Even we have WhatsApp group as well to share your problems, doubt, assignment. Even that's a communication channel for us offline, so we can utilize that as well. Okay, so anything you would like to add, Suruchi, Meghna, and anyone who missed this session and missed any session and they are planning to complete that. I would like to hear from Suruchi and Meghna at this Uh, moment. Yeah, yeah, Suruchi. no, Anil, that's fine. That's Like fine. I'll go through the sessions. Correct, correct. That's the best way actually, um, because it is having all the things in detail. Only the concern is time. So you need to spend those 10 hours. Okay. Yeah, Even Jayesh missed, but somehow Jayesh caught up those things very quickly, and he's doing really good. I have seen his assignment as well. So he also joined. I believe on last Sunday itself. Yes, sir. Okay, yeah. Guys, anything? Okay, so Meghna, um, Yes, just have patience. Okay. Yeah, you're telling something. Yeah. I will cover whatever is done in a couple of days, maybe. Okay. Yeah. Perfect. Perfect. Okay, that will solve the problem. I told you, like we have got 5% of oral syllabus. Mhm. We have a very long journey. Yes. Anil, can we get these programs look like Yes. whatever you Okay. have Okay. Okay. covered? Everything is there in the group, but I will share. I'm not sure you can access the old programs, but I will share everything which is already shared on the group. Let me do it right now. I, so could you please ping me, Suruchi? Here on Zoom chat. No, no, WhatsApp. Okay, yeah. Okay, so I'm sharing everything that we have done till then. Okay. All the docs. Okay, select.
So Meghna and Suruchi, I have shared all the code um, which we did in the class. Okay, so again, I would like to add one more thing since we have another 12 minutes. Um, as I see, like we decided to follow um, organized code. Okay, from day one. If you look at uh, our code, okay, so I have a very huge code by the way. So for example, basics. Okay, so you can see batch 24 code. So these are the classes that we have written. But if you look at this organized code, when I say organize, we have proper folder structure. Okay, I am expecting you do the similar folder structure right now. Okay, right now. Why? Because you can like start putting the code inside the folder. So what are the different folder you need to do at this moment? Let me tell you. First, create basic. Okay, create basic, then create new package as a control flows. Okay, then create new package as a access specifiers. Just create this package right now. Okay, so we'll fill up this package in next 2 days, and we'll continue with the um, like today's concept, that is oops concept. Here oops concept, in oops concept what we have covered, package constructor, that's it. So at least your project should have this package in place at this moment, so that when we start with the new concept, you can add inside the oops concept. How to add a package within the package? You need to put dot. Okay, so this is what the package Well, we have. in my case, it is showing the package sign instead of that folder sign. Package sign, because you are on this package navigator. We are on navigator. This is the view, package view. That's fine, right? Yeah, that's fine. If you want to have the navigator view, you need to go to the Windows, show view, and here you need to search the navigator. So it will look like the same way which is currently seen on the screen. Mhm. Okay, otherwise you are seeing, must be seeing like this. Yes. Okay, so that is also fine. Both works in the same way. Just the view is different. Okay, so just create these packages. Suruchi, you as well. And let me know once done. Rajat, I hope now Uh, you have all this set up. uh, Anil, Yeah, how tell can I me. create a package inside oops Another. concept? Okay, Yeah. so for that, you need to put a dot. For example, in oops concept, I will create a new package. Okay, Mm-hmm. package. You will see by default oops concept is there. So what you can do, put dot and next package. Okay. Okay. Okay, so Okay. this will create a new package.
It's done. Okay, perfect, perfect. Okay, Meghna, are we able to create this all folder? We'll fill up these folders. You will see the same folder like we have used to create all the code which I have shared over the WhatsApp channel. Okay, for example, control flows needs having a this package name as a control flows. Okay, because that is that will remain a placeholder. Rajat seems to be away. Seems to be taking a break. Okay, so Meghna, are you done with Yes, package creation? Anil. Okay, guys, let's take 5 minute break, quick break, and we'll come back and we'll start with the Pradyumna. I will discuss your doubts as well. Okay, once I'm back by 9, and then we'll start with the next concept. Fine. So till that point, let's have a quick break, and we'll see all the doubts and syllabus after the break. Chalo, bye bye.
Okay. Um, Good morning, everyone. I hope we have full house now. Okay. Good morning. Okay. So, okay, fine. Um, uh, Pradyum, you were saying something about the split method. Yes, yes. Okay. So, let me try to write the split method here itself. Okay, in the program that you see on the screen. So, string string yes is equal to ठीक है. Okay, so just edit it. Okay, so you can have any string and you wanted to understand the split method, which is by default provided by Java. So string is an variable for us, and this is split. Okay, regex, forget about regex. Okay, so yeah, we can go with the regex int limit. Okay, okay, let's go one by one. I see one of the additional method as per me, split space. So I want to split this particular um, sentence with space character. Okay, so here is a space character, here is a space character. So ideally two space character. So this string will be broken into three part: hello, then batch, and then 24. So let me mouse over on the string, a split. Can you read this? Okay, so this is what we do. This is what all Java developer does to understand what Java has written. Okay, we are used to it. Once you read it multiple time, you won't have to read this. Okay, because you will get very used to it, and you understand it. So this is the split method. ओके, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहता था कि आप पढ़ पाओ. Okay, so these are the documentation provided by Java. Generally, we should, if we are not understanding what is happening, we should go ahead and read this. Okay, so at this moment I am going with this basic functionality of split. Whatever we have learned, this is a public method, green dot. Then string array, you can easily see that. First of all, this is the package name where the split method is written. So java.lang.string.split, this is the, so for us, for our code, this is a package. Okay, for Java is also written somewhere, and Java written this code in their own package. That's why we created a project, and we have the jdk java 1.8, jdk java 1.8 having lot of code, and out of that, this is one of the code which we are going to use, and its return type is string. What is takeaway for me over here? Only this return type. I'm not worried. I'm just trying to explain the things, or trying to relate the things what we have learned. But at this moment, I'm just concerned about this string as a return type. इसको है ना, मैं नाम चेंज कर देता. ओके, टू अवॉइड द कंफ्यूजन. स्ट्रिंग के लिए इसका रिटर्न टाइप अगर एरे है. ओके, एरे का प्रोग्राम ओपन करते हैं अपन. कहाँ लिखा था बेसिक में ना. ओके, जो अपन ने किया था वही प्रोग्राम. ओके, अरे माय एरे. ओके, माय एरे में क्या करते हैं, ऐसा कुछ अपन डिफाइन करते थे. ओके, स्ट्रिंग का एरे है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग का एरे ऐसा कुछ होता था, राइट. सो व्हेन वी से रिटर्न टाइप, ओके, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग कंट्रोल जेड string, okay, abc is equal to, can you see compilation error is gone, and I have
stored all the splitted elements inside this array. Can anyone tell me from this group what is the length of array of this ABC? 3. We can Three. get it by ABC. No. I can print it. But my point is, by just looking at the array and code, what would be the output? Length is 3. Somebody said, I think Rajat said 3. Someone said 3. Okay. So sys out. Okay. Length is equal to, this is what I was expecting, like ABC dot length. Okay. Such a code you should be in position to write to understand what's going on. 14. What is 14? Okay. Length is 3. Length is 3 because this split code is written by Java in a such a way that whenever it finds a space, it will break this string. Okay. And it will store it into the array of string for okay. Sys out values is equal to plus. देखा सिंपल अपना जो एरेज का कोड था आज इस फंक्शनैलिटी को लगा. लेट मी रन इट. कुछ हुआ? हाँ, देखो वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू हेलो, देन बैच एंड देन 24. Obviously 24, though it's a number, it's a part of literal. It's a part inside the double quote. It will be still treated as string. Fine. So I tried to explain the split, and now you can give a try if you are still pending with other string assignments. So I would say give a try, take time. Okay, so if you guys want this program for understanding, I will share over the chat channel for now. Okay, this is a string program for split method, understanding the split method. Okay, for that you can see simply I used a for loop, I used this length, I used a return type, I declared the string sentence. Can you imagine, in 6 line we have used 5-6 features of Java, and that we have already learned. Okay, so ये शेयर कर देता मैं ग्रुप पे, सिर्फ मेन मेथड करता. Okay, fine. Okay. Yeah, thank you, sir. Okay. Okay, split कब लगेगा? स्प्लिट कब लगेगा? कभी ऑटोमेशन में लगता है कभी कभी. You can guess any test scenario where you want to. Okay, किसी ने स्विफ्ट प्रोटोकॉल पे काम किया है? स्विफ्ट प्रोटोकॉल पे, इस स्विफ्ट प्रोटोकॉल पता है, ये फाइनेंस में स्विफ्ट प्रोटोकॉल, ये अपना जो ट्रांजैक्शन होता है ना, यूपीआई, नॉट यूपीआई एक्चुअली, इट्स अ प्लेन फंड ट्रांसफर, बट स्विफ्ट प्रोटोकॉल. देखो, you must have heard that US has banned Iran and Russia with sanction. What do you mean that sanction? Sanction is like they cannot do the transaction of money from one country to another country. Okay, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? मेरी मर्जी, मेरा कोड है. But the thing is, there is some standards which are there are standards which are set by all the banking system, and कोई भी कंट्री रहे उस कोड से वो ट्रांजैक्शन जाना पड़ता है if you're having your transaction from one country to another. Okay, so
So the thing is, US just disable that particular country's transaction in that SWIFT, and that country won't be able to transfer money from Russia to India. But why? Because even Indian banks are using that SWIFT on the back end. SWIFT क्या है? SWIFT is a code. Now SWIFT code is a messaging system where messages are coming and going by after the validation from, and that message is a like this one. Let me explain you that message. Like 00091. This is your country code. First 6 digit में country code रहेगा. Okay. Then 0011111, ये जो फॉर एग्जांपल 8 डिजिट है, ये बैंक का कोड रहेगा. फॉर एग्जांपल लेट मी पुट इट मोर क्लियर. आईसीआईसीआई बैंक. ओके, इंडिया की आईसीआईसीआई बैंक. ओके, फिर उसके बाद 00005, ये ब्रांच का नाम है आईसीआईसीआई बैंक का. फिर उसके बाद 000, ये अकाउंट का नंबर है फ्रॉम. और यही रिपीट इंफॉर्मेशन होती है कि ये आईसीआईसीआई की जगह ये कंट्री कोड फॉर एग्जांपल यूएस का क्या है 01 है ना, और आईसीआईसीआई की जगह उनका सिटी. नाउ you can see one string is actually having all the information from which account money is getting transferred to which account of other country. Okay, so you need to break this entire message string in a such a way that you can find out which is my account number, which is my bank, which is like source branch, which is target branch, which is target city, country. Okay, so you need functionality from string. You need functionality from string. Here I would say always first zero. Okay, first zero, or you can go ahead with the index. अगर पहले 6 डिजिट में हमेशा इंडिया है या कंट्री कोड है, नेक्स्ट 8 डिजिट में, सो वट एवर द लॉजिक दैट यू कैन पुट. ओके, इंडेक्स ऑफ भी चलेगा. इंडेक्स ऑफ मतलब कौन से इंडेक्स पे है. So in during that case, we need to have the such a type of feature. Okay, so that's why we need it. I'm just giving you example. You can, by the way, this is a very good example to have the like visible output. Okay, so that's about the split. Now, see guys, let's go back to our slides, which is I have shared all the slides, all the programs till date, and all the assignments as well. So please keep trying to go through all the assignments. Okay, guys, we have seen access specifier. Prior to that, local instance variable, we covered the static part as well last time. Then basics we already completed. Constructor, this is something which we have seen in the last session. This is again first or simplest oops concept of Java. It's not that complicated when it comes to the use. Interviewer, you cannot guess what interviewer is going to ask you. To be honest, even I am going to fail sometime, okay, or many time. Why? Because there are so many combination which even I have not tried. But at least from usage perspective, we should know all the basic thing. Okay, so okay, I forgot one point. Since I remember that, I will just add it. In terms of interview, what happens in the interview? So whatever the things that you see on the screen, lot of words, encapsulation, inheritance, static word, blah blah blah, lot of things. Okay, so these are the things. You know, on a given day, interviewer is going to combine all these words, and he is going to give you the scenario that if a method is abstract and we have the like a try catch block, and there is an exception which is IO exception, what will be the output? You know, he just used different combination from the keyword provided by Java. Each keyword is having a behavior. And if one is having one behavior, एक बोल रहा है मुझे पुणे जाना है, एक बोल रहा है मुझे दिल्ली जाना है, एक मतलब एक बिहेवियर बोल रहा है. सो दीज आर द टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, पुणे से एक मुंबई जा रहा है या पुणे से दिल्ली जा रहा है. सो वी नीड टू आइदर फाइंड आउट अ वे बाय विच हाउ वी कैन से दैट हाउ वी कैन अचीव बोथ द रिजल्ट, or sometime those things not at all
possible. Like we can say that this is not going to work. So there are so many combination that interview is going to ask. So make sure that you understand each keyword and its behavior. On that basis, one thumb rule, I would say, not thumb, but mostly it works 99% time. If you see a person using um, some keywords like static, you try to understand that um, that scenario considering static. Will that applicable for static? Mark as a plus. If he says abstract word as well, try to understand the abstract behavior and mark it scenario. If you think that it should work, plus, plus, and if it's a public, plus. So you can say that whatever the scenario he has presented, it is going to work. Okay. If you see static is going to work, abstract is going to work for his scenario, but his scenario is not applicable for public. So it means plus, plus, minus. You can explain him saying that this scenario is not going to work. Some of the thumb rule, I will repeat this thing again and again. Okay. But there will be lot of questions, but those are again depend on the all the basic thing and basic behavior of keywords. Okay. Okay, so again back constructor. Okay, this is what we have seen, and the next concept is encapsulation, which I am parking this concept. I am parking this concept, or I can put inheritance on the up, and we can see the inheritance concept first. Okay, so this is not the only um, inheritance slide. You might see this slide. Inheritance is going to eat our tomorrow's time as well. Okay, this is not going to be over in maybe 2-3 hours, and we will do a lot of practice as well. So inheritance concept is one of the widely used concept in automation from Java. Whatever the Java that we are going to learn in all these slides, this is the most used concept. Okay, inheritance concept. So that's why like you need to be very thorough in terms of inheritance understanding. And it's, I told you, it's concept. We already know how to write the things. It's, and we will just implement whatever the thing that we have learned so far into the conceptual things. Only one word I'm going to add today. Okay, so let's read it, and I will explain like what is the inheritance in simple terms, and then we'll make it complicated. Okay, so let's read it, this small slide. ठीक है यार, ये तो सबसे छोटी स्लाइड मेरे पूरे डेक में है ना, यही है. ओके, और इसी को सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है. मतलब ये, और ऑब्वियसली पॉलीमॉर्फिज्म इज another extension to the inheritance. So let's try to understand. Okay, so अपना पेंट का है लास्ट टाइम का. ओके गाइस, ये पेंट अपना लास्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, मेमोरी, स्टैटिक कीवर्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट मैं वाइप आउट कर रहा हूँ. फाइल, न्यू, इनहेरिटेंस कंसेप्ट, डोंट सेव. ठीक है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट. ओके, लेट्स गो विथ व्हाट वी नो सो फार. व्हाट वी नो सो फार, अपने को पता है. अपने ये हमेशा स्क्वायर ब्लॉक लिखा मतलब इसको क्लास कंसिडर करो. ओके, ये अपन ने अभी तक ऐसा ए क्लास लिखा. ओके, ए क्लास लिखा, एंड उसमें मेथड लिखे. ओके, मेथड, मेथड, मेथड. ओके, ऑब्वियसली अपन उसमें वेरिएबल भी लिख रहे थे, राइट. वी wrote some variable as well, like ये वेरिएबल. ओके, कहाँ गया वेरिएबल? ये वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल लिखे, और इसको हम बोलते थे कि ये हमारा इट्स द स्मॉलेस्ट वर्केबल जावा यूनिट, दैट इज क्लास विथ डेटा एंड बिहेवियर. मेथड को हमेशा बिहेवियर बोलते हैं.
या उसको लाइक इम्प्लीमेंटेशन वर्ड भी यूज करते हैं। आपको ये सारे वर्ड ऐसे थोड़ा रिलेट करने पड़ेंगे, या यू like when you keep listening from me, then you will understand those words automatically. If interviewer is going to say method, you will understand. And उसने बोला implementation करो, तो अरे implementation मतलब क्या? ओके, बिहेवियर उसका क्या होना चाहिए, कैसे लिखोगे बिहेवियर? ओके, you got you will get confused. Okay, so but behavior, implementation, method and code, I would say it's the same thing. Code is actually getting written inside the method only. मेथड के अंदर ही लिखते हैं ऑब्वियसली, और मेथड क्लास में रहते हैं, और वो सब अपन ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं. ओके ओके, सो दिस इज माय small class having 3 method and 2 variable. The thing is in in company or in the live application, we need to reuse the code. Okay, we need to reuse the code, and we need to add extra code as well whenever required. Okay, we need to add the extra code whenever required. Okay, so for example, एग्जाम्पल क्या ले? एनिमल. एनिमल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बट मैंने ले रहा दूसरा थोड़ा अच्छा समझने के लिए. ओके, हाँ, ओके, यू नो मारुति, हुंडई, Volkswagen, BMW, Audi. Okay, so these are all cars. These are all companies and they make cars. Okay, so मैं यहाँ लिखता एक. ओके, ये है कार. कार. ओके, कार इज हैविंग सर्टन कॉमन बिहेवियर. ओके, ऐसे कार है कि जिनका जो बहुत ही बेसिक कॉमन बिहेवियर है, उसको अपन मेथड में कन्वर्ट करते हैं. शायद ये है एक कलर देता, कलर. ओके, देन नंबर ऑफ व्हील्स. नंबर ऑफ व्हील्स, आप बोलोगे यार नंबर ऑफ व्हील्स सबको कार ही हो गए, 4 ही हो गए, राइट? सारे कार्स को ऑब्वियसली 4 ही होने वाले हैं. पता नहीं किसी ने 5 व्हील की निकाल दी गाड़ी तो. ओके, बट आई एम जस्ट पुटिंग वेरी जेनरिक थिंग. नंबर ऑफ व्हील्स 4 रहने ही वाले सब कार को. दैट्स व्हाट लाइक इट्स अ एंड कलर. हर गाड़ी को कलर रहने वाला है. ओके, देन देन इंजन कैपेसिटी, ये भी सबको रहेगा. इंजन कैपेसिटी हर कार की एक, मतलब 1000 cc, 1200 cc, these are the engine capacity. Okay, so let's take with these 3 example: color, number of wheels and engine capacity. Now the thing is, this is something which is very common in all the car, but infotainment system. Okay, let's write those things as well. मुझे म्यूजिक, ओके, वेंटिलेटेड सीट, और क्या होता है? ओके, वो टच स्क्रीन. ओके, और ऐसा क्या है जो, अरे यार कार के फीचर यार. ओके, कैमरा. कैमरा, करेक्ट करेक्ट. क्यों, क्या है वो? 360 डिग्री कैमरा डालते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ओके, तो ये फीचर और भी 2-4 डालते हैं यार. आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, मुझे आवाज नहीं आया आपका. चैट चैनल के चैट पैनल क्लिक. ओके, सनरूफ, परफेक्ट. सनरूफ हमेशा टॉप मॉडल में ही मिलता है इंडिया में.
ओके ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ओके, हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, एडास, एबीएस मैंने लिखे नहीं क्योंकि सबको समझेगी नहीं हो। ओके फाइन, जीपीएस ओके, हिल होल्ड ओके, देन ओके बहुत कुछ लिखा, चलो ठीक है, ये सबको समझने वाले कंसेप्ट है। ओके क्रूज कंट्रोल परफेक्ट। ओके नाउ द थिंग इज, इसमें से मारुति ने किसी मॉडल में या मारुति के सारे मॉडल में उसमें से डिसाइड किया कि ये सिर्फ पहले तीन ही कंसेप्ट देने वाले। ओके along with all the behavior of car, ऑल द बिहेवियर ऑफ कार, मतलब कार का जो बिहेवियर है ये ऐसे रहने वाला है। ओके कलर सब कार को रहने वाला है, नंबर ऑफ व्हील्स 4 रहने वाले हैं, इंजन कैपेसिटी भी सब कार को रहने वाली है। एट द सेम टाइम इसमें से ये आगे वाले तीन ही कंसेप्ट वो दे रहे हैं, मतलब तीन ही फीचर वो मारुति के नेक्स्ट कार में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सो माय पॉइंट इज, ये है मारुति, मारुति ओके मारुति की कार, या फिर आपको आपके पास बीएमडब्ल्यू होगी तो वो भी लिख लेंगे, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जागुआर। अभी मारुति गरीब लोग हैं हम, मारुति से स्टार्ट करते हैं। ओके सो मारुति में मुझे ये सारे फीचर चाहिए, मारुति में मुझे ये सारे फीचर चाहिए, या मारुति बोल रही है कि मैं ये सारे फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके सो मारुति ने ये सारे फीचर इंप्लीमेंट कर दिए। ओके इंटरेस्टिंग, नाउ द थिंग इज, if Maruti is having this feature, this means that he or Maruti is already has this all these features, because Maruti bhi car hai। Okay so logically something like this, कि ऊपर के सारे कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट मारुति को अवेलेबल चाहिए ही चाहिए, तभी जाके वो कार होगी। नहीं तो मारुति ने ये तीन सिस्टम डाले और हम बोलेंगे ये कार है, अरे जिसको व्हील्स ही नहीं वो कैसे कार हो सकती है। मारुति के कार में ये तीन चीजें एडिशनल है अदर देन दिस थ्री बेसिक थिंग। ओके क्लियर, ये गाइडलाइन है, सपोज ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रोड मिनिस्ट्री की, कि भाई हर कार को कलर चाहिए, नंबर ऑफ व्हील 4 ही चाहिए अगर वो कार है तो, उसकी लेंथ इतनी चाहिए, सेडान है तो, हैचबैक है तो, एसयूवी तो। सो दिस आर द गाइडलाइन सेट बाय द government, road ministry, and something like on the top of that Maruti is adding, considering those guidelines are already there, and on the top of that Maruti is adding its own feature। ओके ऐसा भी हो सकता है कि मारुति के स्विफ्ट मॉडल में, ओके स्विफ्ट मॉडल में, डिजायर मॉडल में और ब्रेजा मॉडल में, इस तीन में से कुछ दो में इंप्लीमेंटेड है। ओके कुछ में तो एक ही इंप्लीमेंटेड है, ऐसा भी हो सकता है। 3 प्लस म्यूजिक इज इक्वल टू स्विफ्ट, 3 प्लस म्यूजिक प्लस वेंटिलेटेड सीट इज इक्वल टू ब्रेजा, लेटेस्ट मॉडल है। 3 प्लस टच स्क्रीन प्लस म्यूजिक इज इक्वल टू आपकी सियाज। गेटिंग माय पॉइंट इज, कलर एक बार डिफाइन हो चुका है कि वी विल हैव ओनली रेड एंड ब्लू एंड ब्लैक कलर, और नंबर ऑफ व्हील्स 4 ही रहने वाले हैं। ये कोड हम फिर से मारुति में जाके क्यों लिखेंगे, स्विफ्ट में जाके क्यों लिखेंगे। ओके सो दिस कोड is being reused by Maruti as well as by Swift, Ciaz and Brezza car. Okay, that is something called reusability. Reusability. Little bit. समझ रहा है थोड़ा बहुत? समझ रहा है? This means that we don't have to little bit ही, मैं little bit ही बताया अभी तक, क्योंकि 2 दिन मुझे बात ही करनी है इस पे, इनहेरिटेंस पे। ओके क्योंकि ये यूज करने वाले
आपके आधे क्वेश्चंस, आधा फ्रेमवर्क इस कंसेप्ट पे डिपेंड है ऑटोमेशन का, आधा फ्रेमवर्क, रेस्ट ऑल विल रिमेन अ सपोर्टिव फीचर्स। ओके ओके, सो ये हो गया एक एग्जांपल। ओके, तो दूसरा एग्जांपल भी चाहिए मुझे, रीयूजेबिलिटी ऑटोमेशन में बताओ अनिल, ऑटोमेशन में बताओ मुझे कि रीयूजेबिलिटी कैसे काम करती है। ओके, so let me write another class. Okay, so यहाँ एक मेथड लिखता, ओके डायरेक्ट लिखता, चलो एक मेथड है फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर नेट बैंकिंग, forgive me with my typing mistake, okay, and forgive me अभी इसको रीसाइज नहीं कर सकता। नेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफर यूजिंग नेट बैंकिंग, ओके सब लोग करते हैं राइट। नेट बैंकिंग में क्या होता है, ऑप्शन होता है कि आपको नेट बैंकिंग, अभी बहुत सारे ऑप्शन है, क्यूआर कोड, यूपीआई, ब्ला ब्ला ब्ला, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेट बैंकिंग का एक मेथड है। व्हाट डू यू मीन बाय मेथड अनिल, समझ ही नहीं आ रहा। मेथड मतलब आपका एक यूआई है, यूआई में सिलेक्ट टारगेट अकाउंट, ओके ओके, मैं लिखता यहाँ एक यूआई है, यहाँ टारगेट अकाउंट from which account you want to transfer। यार मुझे ना थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा हूँ इस बताने में, रुको इसको डिलीट करता। ओके, अच्छा लिखता यूआई, एक ये यूआई कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक का कंसिडर करो या एचडीएफसी बैंक का। ओके, तो यहाँ क्या होता है, ऐसा कुछ फॉर्म ओपन हुआ, फ्रॉम अकाउंट नंबर टू अकाउंट नंबर, और क्या होता है फ्रॉम टू, ओके उसके बाद अमाउंट, अमाउंट अमाउंट उसके बाद हाँ ठीक है, सबमिट और कैंसिल बटन। ओके, सो इसके लिए मैं यूआई क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा विजिबली विजिबल हो गया ना कुछ, ये आप यूआई में एंटर करते हो ऐसा कुछ। ओके, और यहाँ होते हैं सबमिट और कैंसिल बटन ट्रांजैक्शन को। ओके, ऐसा कुछ यूआई होता है, अपन फील करते हैं, अभी इसको ऑटोमेट करना है मुझे। मैंने क्या किया, ये मेथड लिखी, ओके सो मैंने ये अकाउंट फिल किए और सबमिट बटन क्लिक किया, फंड ट्रांसफर हो गया, सक्सेस मैसेज आ गया। माय पॉइंट इज, फंड ट्रांसफर के, ये जो फंड ट्रांसफर है ये अलग तरीके से भी कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, बट ये बिहेवियर, ये बिहेवियर मुझे दूसरे पेज में भी दिखाना है। This particular behavior is present on a UI page. Now the thing is, when I go on any Amazon.com और Amazon.com से मैं फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ, that they are transferring for the net banking, yeah, even you are paying any bill and you are diverted to the ICICI Bank website, you are filling or you are submitting your transaction of your tax, and that site is diverting you to the uh, ICICI Bank. Now you know all this different scenario, all these are different scenario. You are doing some online shopping, you are submitting the PCMC tax, you are submitting गवर्नमेंट टैक्स, और कहाँ का होता है नेट बैंकिंग, जहां जहां नेट बैंकिंग है वो सब UI, it will divert to this particular page. Okay, does this mean that they have to write separate code? Maybe or may not be. First thing, why? Because they may have some added element on the UI, added element on the UI to accommodate, or like rent transfer कर रहे हैं थ्रू क्या बोलते हैं nobroker.com से। ओके, तो ideally they are doing or invoking the ICICI Bank website with the same page with additional some parameter. Does this mean that for each and every
third party, I say have to write the code. Answer is no. They will write the common code at one place and they will make sure that all other third party application using that existing code along with their own code. Okay, so that is something called as uh, reusage. Reusage, which for which like we are using the existing code. Either we are adding something, either we are adding something to it, or we are using as it is. Okay, ये कंसेप्ट इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. इसमें बहुत सारे टाइप्स है. विल गो वन बाय वन. आपको आई एम नॉट श्योर लाइक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ, बट it will take time, and that's why we are going to spend significant amount of time to understand the inheritance functionality. ये कोडिंग में भी देखेंगे, एक कोडिंग में भी देखेंगे. ठीक है, कोडिंग के लिए जाए अभी. अदरवाइज ये ऐसे स्लाइड ओपन है, इसके ऊपर रिपीट आ सकते हैं अपन कभी भी. Okay, so what you need to do, make sure that in oops concept you need to create one folder as inheritance. Okay, just create one inheritance folder. एक इनहेरिटेंस का फोल्डर बना दो. ओके, सो इनहेरिटेंस का फोल्डर बनाया. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. चलो मैं इनहेरिटेंस चालू करता. ओके, न्यू, एकदम जो पता है आज तक जो सीखा है वही से चालू करते हैं. ओके, सो B24 पेरेंट क्लास. नेम भी मैं एकदम सिंपल दे रहा हूं. B24 पेरेंट क्लास. आई एम नॉट एडिंग मेन मेथड. क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं? बिकॉज मुझे इसमें इसको रन ही नहीं करना है. सो इसमें मेन मेथड ऐड नहीं की. पब्लिक नॉर्मल मेथड क्रिएट कर रहा हूं. पब्लिक void मेथड 1 sys out in parent मेथड 1. ओके, और एक लिख लेते, दो मेथड लिख लेते हैं. मेथड 2 int I is equal to 10. ठीक है, looks good. This is what we wrote in our last sessions. So I have just wrote the same code. Now I want to make this parent-child relationship. I want to make this parent-child relationship, ये वाला या कार वाला parent-child की relationship. Okay, how I can connect these or this class to another class. Okay, for that I obviously I need to write the class new. एक और एक क्लास लिख रहा हूं. B24 अरे क्या हो गया, इसको रिनेम करना पड़ेगा. 24 चाइल्ड क्लास. ओके, ये देखो मेरा क्लास ऑलरेडी सेव हो गया था, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिनेम फाइल. क्योंकि जावा क्लास और फाइल का नाम सेम होता है. ये देखो यहाँ और यहाँ सेम होता है फाइल का नाम. ओके, नाउ आई हैव renamed this and saving it. This doesn't mean that your file is also getting saved. This will remain a compilation issue. In Java you cannot have the file name and class name different. तो ये Eclipse सजेशन करते हैं माउस ओवर करने का. कभी भी रेड लाइन दिखी, रेड लाइन दिखी उसको माउस ओवर करो. वो येलो लाइन है इग्नोर करो. ये येलो लाइन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, यू हैव डिक्लेयर्ड समथिंग बट यू आर नॉट यूजिंग इट. फाइल देखो, ये फाइल हो गई B24 पेरेंट और चाइल्ड. नाउ आई विल राइट समथिंग. कंट्रोल V, यहाँ मेथड 3 लिखता समझने के लिए.
मेथड 3 एंड यहाँ लिखता चाइल्ड. ओके अनिल, यू हैव रिटर्न parent and child. Perfect, perfect. Let's go and create the टेस्ट क्लास. टेस्ट क्लास किसका बनाऊं, चाइल्ड का बनाऊं या पेरेंट का बनाऊं? मैं पेरेंट का बनाता, किसी एक का तो बनाना पड़ेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. हाँ, ओके. आई हैव नॉट डन एनी इनहेरिटेंस एट दिस मोमेंट. मेन मेथड ऐड कर दिया, फिनिश किया. ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू with those classes. Okay, obj is equal to new. ये मेरा पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और B24 चाइल्ड क्लास है. इसका 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 इसको मैं पेरेंट लिख देता. पेरेंट, ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है. इज इक्वल टू न्यू. ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. लेट्स सी पेरेंट डॉट. डिफरेंस देखना है ना अपने को कि क्या होता है. अनिल, I can access method 1 of parent class, method 2 of parent class. Okay, चाइल्ड का तो कुछ आया नहीं. ओके, चलो ये एक्सेस कर लेते हैं मेथड 1. मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि इतने आसानी से अपन इनहेरिटेंस को नहीं छोड़ेंगे. In terms of practical real example, child on. Okay, so here I can only access method from class 3. Sorry, method 3 from class child. अनिल, तो ये कंसेप्ट तो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है. ये मैंने तो दिया है उनको नाम पेरेंट और चाइल्ड. पेरेंट चाइल्ड नाम देने से कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा. वी नीड टू डू सम टेक्निकल चेंज in our code. Okay, so I have one class having two method, I have one class having one method, and I am able to access those method as it is, which I used to do previously. जो पहले मुझे सीखा था मैंने वही है अभी तक. Now what change I need to do in this two class? Okay, inheritance says your child class will decide from which parent you need to access the data member and behavior, that is method and variable. तो उसके लिए एक वर्ड है, ये देखो एक्सटेंड. अच्छा आ गया, एक्सटेंड्स. चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स B24 पेरेंट क्लास. मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ये एरो. ये एरो मतलब है एक्सटेंड कीवर्ड. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ये जो है मैंने एरो किया था, ऊपर से सब कुछ नीचे इनहेरिट हो रहा है. यू आर इनहेरिटिंग फिजिकल फीचर्स फ्रॉम योर पेरेंट, राइट? सो द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल. एंड उसको जावा में रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंटैक्स यूज करते हैं. चाइल्ड बोलता है कि आई विल एक्सटेंड माय पेरेंट बिकॉज पेरेंट पहले क्रिएट हुआ है, और पेरेंट आपसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं लेता. ओके, चाइल्ड जनरली टेक तो ऑल द, इसलिए मैंने नाम भी वही दिए टू अवॉइड द कंफ्यूजन. दिस पेरेंट क्लास, ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी अवेलेबल टू यूज बाय चाइल्ड. अभी देखते हैं, सेव करके सब सेव किए मैंने प्रोग्राम यहाँ. नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट क्लास एंड लेट्स सी पेरेंट को क्या इंपैक्ट हुआ है. पेरेंट डॉट, आज भी वो एक ही वेरिएबल एक्सेस कर रहा है और दोनों मेथड एक्सेस कर रहा है. तो इसको तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं हुआ. यस, इवन ही इज नॉट अवेयर दैट ही गॉट एक्सटेंडेड. और उसका यूज कोई कर रहा है, उसको वो भी नहीं पता. जनरली चाइल्ड, आजकल के चाइल्ड पेरेंट्स का बहुत यूज कर लेते हैं और पेरेंट को पता भी नहीं था. वही कंसेप्ट इधर भी. ओके,
कि पेरेंट को पता भी नहीं है कि कौन सा चाइल्ड कैसे उनको यूज कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, पेरेंट को डिलीट। लेट्स सी चाइल्ड में क्या हुआ है। चाइल्ड डॉट, now the interesting part is I can access the method, I can access the method which is written in my own class, that is in own class means जिसका ऑब्जेक्ट बना है उसका child class, as well as all the method from parent class are available for me to use along with variable. वेरिएबल को वही कंसेप्ट, बट मेथड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मेथड के सामने आपको दिख रहा है कि ये पेरेंट मेथड में एक्सेस कर रहा हूं, जो पहले एक्सेस नहीं हो रही थी, सिर्फ मैंने एक्सटेंड दिया। बोथ मेथड, दीज आर द मेथड, लिख लेते हैं ना यहाँ कमेंट, मेथड एक्सेसिबल फ्रॉम पेरेंट। ओके, सो this is the entry for you to the inheritance. Any doubt guys? Any doubt? एक छोटा सा कीवर्ड ऐड किया है मैंने बस, ये चाइल्ड क्लास में बस एक्सटेंड, and I am just able to access the method which is not written in my own class but written in the parent. Pretty much clear? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल एग्जांपल दिया है। ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बट नॉट नाउ, विल मेक इट स्टेप बाय स्टेप। यहां तक समझा सबको? ओके, चैट चैनल पे मैं ठीक है। ओके, सो गाइस वी आर गोइंग टू राइट दिस कोड राइट अवे। ओके, सो मैं ये क्या करता, थोड़ा डिवाइड करके आपको देता कोड। ओके, एक ऊपर है, ट्राई टू राइट द बेस कोड फर्स्ट। ओके, एक मिनट, ये इसको नीचे डालता, आपको तीनों कोड एक साथ दिखाई दे ऐसा कुछ करता मैं। ओके, दो, और ये टेस्ट क्लास, इसको, हाँ, आपको सब कोड दिख रहा है अभी। ओके, वो कार का एग्जांपल भी अपन लेंगे। ठीक है guys, and we can do for parent class as a well, right, so that parent can access child class too. Okay, so you are saying एक क्लास दूसरे को और दूसरा फिर से पहले को। ओके, करते हैं, चलो। वेरी गुड क्वेश्चन, विच इज नॉट सपोर्टेड। पेरेंट क्लास चाइल्ड को फिर से एक्सटेंड करेगा, देखते होता है कि नहीं, नहीं होना चाहिए। ओके, देखा नहीं हुआ, सेव करता, क्यों नहीं हुआ, वो लूप में चला जाता है ना, कुछ तो होता है। एरर देखते क्या, द हायरार्की ऑफ द इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, दिस इज टेक्निकली, सिंटैक्टिकली अलाउड इन ए। ठीक है, गुड क्वेश्चन बाय द वे। ओके, ठीक है, चलो ये कोड लिखते हैं। एंड गाइस प्लीज कीप राइटिंग कमेंट्स लाइक दिस वन। मैंने यहाँ लिखा है कमेंट, आपको भी ऐसा कुछ कोड में लिखते रहो, कमेंट लिखते रहो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर ओन कोड आफ्टर 1 month। एज आई टोल्ड यू, ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड योर ओन कोड after 1 month or after some time. It's better to write the comment. Okay, is it possible to both way, like from child class to parent class? हाँ हाँ, but at a time only one, hierarchy only one होनी चाहिए। मैंने चाइल्ड का नाम दिया है, बट यू कैनॉट हैव चाइल्ड इज एक्सटेंडिंग पेरेंट एंड पेरेंट इज एक्सटेंडिंग चाइल्ड। दैट इज नॉट अलाउड टेक्निकली, syntactically in Java. Almost same question asked by Radhika.
रजत, दिस वाज फॉर यू। ओके, हाँ, टेक्निकल चैलेंज है, क्योंकि उसके बाद मेथड कौन किसके एक्सेस करेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड वो लूप में चला जाएगा जावा। सो वी नीड टू हैव द कंसिस्टेंसी। ओके, सो स्क्रीन ओपन है, मैं जस्ट म्यूट पे हूँ गाइस।
Guys, are you done? Pradyumna, sorry. Yeah, sure, Anju. Pradyum, I am not understanding what you are saying. Earlier, we used to see. At the very first line, we Uh, used to see package as a folder name. But once we use the inheritance mhm. package, which used to means earlier show the folder name, is now showing the oops concept dot inheritance, but Yeah, not the because yeah, but not the. but not the actual folder name. Yes, I have written the folder name like that. Inheritances. Okay, okay, See, okay. In your case, only the dot. The dot is considered as a path. path. Okay, okay, okay. Okay. Yes. So maybe only SRC won't be displayed. It will remain as it is. Otherwise, it won't compile. Even if we put something, it won't compile. That folder name must match with this package name. That is, uh, this folder is actually Windows folder. In Windows, we generally call it as a folder. So if you would like to see the location, मैं बताता आपको. हाँ, एक मिनट. पैकेज पे जाता हूँ. राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज. यहाँ है ना एक आइकॉन है. ये देखो, ये पाथ दिखता है पूरा. ये आपका कोड कहाँ रखा है. तो इसको अगर क्लिक किया ना, यू विल डायरेक्टली हैव दैट इनहेरिटेंस फोल्डर. ये इनहेरिटेंस और इसमें सारे क्लोज कोड है. तो ये जो एसआरसी के अंदर का जो फोल्डर होता है, जनरली दिस इज योर पाथ. एसआरसी बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड होता है. रेडिकल जावा प्रोजेक्ट का नाम है. जो ऑब्वियसली इक्लिप्स ने कहीं तो रखा होगा कोड, तो यहाँ रखा है कोड. सारा कोड यहाँ रखा है. इक्लिप्स तो क्या है, जस्ट ब्रोकर है, इंटरमीडिएटर है अपने को, अपन के बीच में और जावा के बीच में. It will provide you the infrastructure. It will facilitate the um, environment to run, environment to code. Okay, debug. तो अपना कोड वही है, इसलिए पैकेज का नाम डिफरेंट हो ही नहीं सकता. Okay. Guys, are we done with this code? Yes, done. Yes. Okay. So now let's go on the slide. Okay, inheritance in the Java inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of the parent object. This is what यही लाइन हमने अभी प्रूव की. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. टाइप्स क्या है? सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टू. Once you understand this, I will again explain another scenario, practical scenario. कि अपना क्लास ये, ओके, क्लास बी, ये ए, ये बी. ओके, इसमें मैं लिखता मेथड 1, मेथड 1, सेम जो अभी काम किया ना अपन ने. मेथड 2. इंटरेस्टिंग चीजें एक एक ऐड करता, एकदम आराम से जाते, क्योंकि आप भी अच्छे से समझ लो. 50% अंडरस्टैंडिंग चाहिए आज. 50% भी काफी है, पहला ही दिन है. मेथड 4. ठीक है. नाउ द थिंग इज, this particular concept we have implemented, and that concept itself is called as single inheritance. मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है. दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. ओके, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस.
मतलब whatever the code that we have written, we have already covered this single inheritance. क्योंकि obviously inheritance होगा तो इसमें से कौन सा एक concept तो cover होने वाला है, और वो हमने already cover कर लिया, single inheritance. Now मैं कुछ डायग्राम में चेंजेस करता. ओके, इसको सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको यहां डालता. ओके, एंड आई विल क्रिएट वन मोर क्लास, क्लास सी, ग्रैंड चाइल्ड. अपने हिसाब से ग्रैंड चाइल्ड अपना क्या है, ये पेरेंट, चाइल्ड, बी इज अ चाइल्ड एंड सी इज ग्रैंड चाइल्ड. सी इज ग्रैंड चाइल्ड. सो देन कैन वी डू सच अ थिंग, आप करने वाले हो ये. कैन वी डू सच अ थिंग वेयर we'll have method 5, method 6. पहले आप कोड लिखोगे, उसके बाद मैं कोड लिखूंगा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज, कहा गया स्लाइड, मल्टी लेवल. यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ levels. You can have any number of levels. Means you can create a b, मतलब b is a child of a, c is a child of b, d is a child of c. That will remain a multi level inheritance. Okay, so logically multi level will be formed with the help of multiple single level inheritance. एक्चुअली ये ए टू बी वाला एक सिंगल है, और बी टू सी वाला पर भी सिंगल है ये, अगर इसको निकाल देंगे तो. ओके, बट ये कंबाइन करके बनता है मल्टी लेवल. ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नाउ वी हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड दिस. कैन यू गाइस ट्राई टू राइट द कोड विथ नया क्लास, उसका नाम होगा माई ग्रैंड चाइल्ड, उसमें मेथड नंबर 5 और 6 आएगी. एंड create the object of grandchild in the same test class. यही टेस्ट क्लास में यहाँ क्या क्या है, पेरेंट, चाइल्ड, इसके बाद एक क्लास आएगा ग्रैंड चाइल्ड, और ग्रैंड चाइल्ड इज एबल टू एक्सेस अगेन फ्रॉम मेथड 1 to method whatever the method that you have written till end for grandchild. Are you going to do this? ओके, उसके बाद मैं लिखता सेम कोड, मैं भी राइट करता. डोंट वरी अबाउट दैट. इवन आई एम गोइंग टू राइट द सेम कोड, बट आई वांट यू टू थिंक, I want you to do on your own without looking any existing code. Okay, let's do it. Let's do it. मैं भी लिखूंगा but आपके बाद. Okay, all the best guys.
Okay, so I see 3 done. Okay, so I'm still waiting for few more confirmation. 4, 5. Done, done. Okay, okay, fine, guys. Okay, so now if you are not done, maybe you can follow me now. As I said, class A, B, or parent and child, which I have already written. Now I just need to make sure that I need to create one grandchild class. Okay, so let me do that. B24 grandchild. B24 grandchild class. Finish. Okay, यहाँ आ गया ना वो. Let me reorganize my code so that you can see on full screen. Parent हो गया. Grandchild में जाता यहाँ. Control C, Control V. इनके मेथड के नाम चेंज कर देता. 4 मैं 5 6 करता. उधर एक लिखी नहीं थी. 6 आयो method 6. Okay, so let me save it. Let me create an object of this. Okay, obj new is equal to. Okay, if you look at this object grandchild dot now, okay, you can't you can access only 5 and 6 because we have not made any changes in this code to access the child. So let's go back to grandchild and let's extends B24 child class and let's save it. Go to the test class having a main method and now you can see 1 2 3 4, not 4. I have not written 4. Let me write 4 and 4 save in test class. Okay, so I am able to access all the method throughout the levels. Okay, that's what this concept is all about. Okay, 4 5 and then 6. Done. Let me run it. Run to किया ही नहीं था मैंने. You can see in parent method पहले 2 parent के हुए फिर child method एक access हुआ है. Child हाँ एक और एक करना चाहिए. Exactly like a diagram. जो डायग्राम मैंने शेयर किया था ना. ओके, पेरेंट का रिपीट क्यों हुआ? हाँ बराबर रिपीट होगा. इधर भी रिपीट हुआ और मैंने इधर फिर से किया है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस even though that particular method is not written in your own class. However, with the help of extends keyword, just remember this particular keyword, that without this keyword there won't be any inheritance behavior implemented um, in your code. Okay, now my next question is, what will happen if okay, first question is, can I have the same method in all the 3
classes, can I have the same method? Okay, so parent से लेके child में कोई मेथड ऐसी सेम कर सकते हैं क्या? ओके, मैं लिख रहा हूँ गाइस, दिस इज, सी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कंसेप्ट और उसके अंडरस्टैंडिंग को। एक कॉमन नाम की मेथड लिखी, इन पेरेंट कॉमन। ओके, इन पेरेंट कॉमन, ये मेथड मैं सब जगह डाल रहा हूँ। चाइल्ड में डालता पहले, ऑब्वियसली अभी तो मैं चाइल्ड में बैठा हूँ, राइट, तो मैं चाइल्ड में डालता हूँ। चाइल्ड को चाइल्ड लिखा है, ओके, ग्रैंड चाइल्ड को ग्रैंड चाइल्ड लिखा है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गाइस, repeat let me repeat this concept we have seen. Now my point was, this concept we have seen, my point was, can we have the common method? ऑब्वियसली उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। व्हेन आई से इम्प्लीमेंटेशन, उसमें कोड लिखा है मैंने इन इन ए। ओके, यहाँ एक कॉमन है, कॉमन, इसको लिखा है इन बी, और यहाँ एक कॉमन है इन सी। ओके, ऐसा कुछ लिखा है। तो मेथड का नाम सेम है बट उसके अंदर का कोड डिफरेंट है। ए इसमें लिखा है कुछ अलग, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। दिस इज व्हाट आई हैव डन जस्ट नाउ बाय सेइंग इन पेरेंट चाइल्ड में लिखा मेथड का नाम सेम, इसमें लिखा चाइल्ड ऑन, इसमें लिखा ग्रैंड चाइल्ड। व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? इसको नाम देते थे ना अलग, नो, कुछ बिहेवियर के नाम सेम रहते हैं प्रैक्टिकली, बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होता है। लॉगिन, ओके, आईसीआईसीआई का लॉगिन और किसी भी, फॉर एग्जांपल आप जीमेल का लॉगिन ले लो, ओके, फेसबुक का लॉगिन ले लो, इंस्टा का लॉगिन ले लो, ओके, या फिर आप किसी बैंक का लॉगिन ले लो। सब में अलग अलग बिहेवियर इंप्लीमेंटेड, सब लोग लॉगिन कर रहे हैं, सब लोग लॉगिन कर रहे हैं, बट जीमेल पे दो टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, और बटन आ रहा है सबमिट, ओके, और कैंसिल बटन ये नहीं है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी आ रहा है, उसका लॉगिन डिफरेंट हो गया, राइट। उसके बाद दूसरे किसी लॉगिन पे यूजर नेम है, पासवर्ड है, और उसके नीचे है ना, वो अपना क्या होता है, इमेज क्या होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अरे इमेज में वो कैप्चा, कैप्चा करेक्ट, वी हैव कैप्चा एंड वी आर पुटिंग द कैप्चा। ओके, सो देखो, हर एक ने काम तो वही किया है लॉगिन का, हर एप्लीकेशन ने अपना यूआई लॉगिन के लिए ही लिखा है, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर। वही मैं बोल रहा था, ये वही लॉगिन है बट इसका बिहेवियर हर एक ने अपना अपना अलग अलग इंप्लीमेंट किया हो सकता है। जीमेल का, ओके, और या फिर इंस्टा और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी है, दोनों का लॉगिन सेम तरीके से भी हो सकता है। या जीमेल में और कोई, जीमेल का क्या होता है, जीमेल का कोई ऐप नहीं, दूसरा होगा। ओके, बाय द वे, जीमेल का कोई भी एप्लीकेशन हो या गूगल का मल्टीपल एप्लीकेशन हो गए तो उनका शायद बिहेवियर लॉगिन का सेम हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी भी है कि डिफरेंट भी हो सकता है। इफ द एप्लीकेशन इज डिफरेंट देन ऑब्वियसली ये इंस्टा, फेसबुक, गूगल अलग ही लॉगिन तरीका, बैंक का अलग ही लॉगिन तरीका। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन बोल रहा हूं मैं, इसलिए बिहेवियर बोल रहा हूं। और बट फंक्शनैलिटी, मैंने ऐसे फंक्शनैलिटी सेम, फंक्शनैलिटी का नाम क्या है, लॉगिन। यहाँ मैंने कॉमन वर्ड लिखा है अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, बट दैट इज अ लॉगिन, फंक्शनैलिटी इज अ लॉगिन बट हैविंग डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट। इसीलिए मुझे हर एक क्लास में जाके अलग सा लिखना पड़ा। ओके, सो दैट्स व्हाट एक्सप्लेन कर लिया। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, ये चाइल्ड क्या करता है देखते हैं। ओके,
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। पेरेंट डॉट कॉमन, ओके, ये मेथड ये हो गई। कंट्रोल सी कर लेता, यहाँ लिखता चाइल्ड डॉट चाइल्ड कॉमन एंड ये ग्रैंड चाइल्ड है, वो भी किया है क्या? ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये कमेंट कर दिया। लेट्स गो विथ ओनली पेरेंट, मतलब कोड एग्जीक्यूट इतना ही कर रहे हैं, ये नीचे बहुत प्रिंट हो रहा है ना, उसके लिए रन एज। ओके, क्या हो गया? कंपाइलेशन कौन से क्लास में? यहाँ कहीं कुछ ज्यादा कमेंट कर दिया, ओके एक रह गया। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके बराबर है। इसने बोला इन मेथड, इन पेरेंट मेथड वन, इन पेरेंट मेथड टू, इन पेरेंट कॉमन। ओके ओके, लुकिंग गुड, लुकिंग गुड, ये समझ में आ गया। इसको कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। ओके, अभी चाइल्ड से एक्सेस कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। ओके, मेथड थ्री, हाँ मेरी मेथड थ्री है, मेरी मेथड खुद की फोर है। ये दो मेथड ऊपर से आई है, पेरेंट से आई है, इसलिए वर्ड भी आया पेरेंट। और ये मेथड मेरे पास खुद की है चाइल्ड, या पहली बार तो ये पेरेंट का आया था, बट ये चाइल्ड वाली एग्जीक्यूट हुई है इस बार। ओके, मतलब मेरे क्लास की खुद की मेथड एग्जीक्यूट हुई, ना कि पेरेंट की। दो दो आई हैव कॉमन मेथड नेम, वो दो बार नहीं एग्जीक्यूट हुई है। इफ यू लुक एट, लेट मी रन इट नाउ, अभी उसको भी अनकमेंट कर दिया। ये देखो, इसका आउटपुट क्या है? पहला लाइन इन मेथड वन, पेरेंट मेथड वन। इसका आउटपुट क्या है? इन पेरेंट मेथड टू। इसका आउटपुट क्या है? पेरेंट वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हम पेरेंट के ऑब्जेक्ट से काम कर रहे थे, पेरेंट का कोड एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अभी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब ऑब्वियसली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, बी वाले। ये दोनों खुद की मेथड एक्सेस हुई, हाँ ये दोनों खुद की मेथड एक्सेस हुई। ये दोनों मेथड ऊपर से आ रही थी, तो वो एक्सेस हुई। और चाइल्ड बोला कॉमन मेथड एक्सेस करनी, चाइल्ड बोला मेरे पास भी कॉमन मेथड है और मेरे पेरेंट के पास भी कॉमन मेथड है, बट मैं मेरी एक्सेस करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा बना है। तो चाइल्ड एबल टू एक्सेस इट्स ओन मेथड नेम्ड एज कॉमन। क्लियर यहां तक? डाउट किसी को? एंड द सेम एप्लीकेबल फॉर द ग्रैंड चाइल्ड एज वेल। क्लियर? समझ आ रहा है? कैप्चर कैप्चर, यस, ठीक है। ये देखो, अपने यहाँ दो लाइन का कोड लिखा है, दिस डजंट मीन दैट कि कंसेप्ट सिंपल है या कंसेप्ट डिफिकल्ट है। मैं यहाँ 200 लाइन का कोड भी लिख सकता हूँ, यहाँ 200 लाइन का 2000 लाइन का भी कोड लिख सकता हूँ, बट दैट्स नॉट जावा। मैं बोलूंगा 200 लाइन का कोड लिखा है तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गया, बट जावा इज समथिंग लाइक दिस। ये है जावा। ओके, कॉमन मेथड। सो कैन यू अपडेट योर कॉमन मेथड इन योर एग्जिस्टिंग कोड नाउ? कैन यू अपडेट? सबने यस लिखा है, तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। ओनली थिंग, उसके उसके ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, प्रॉपरली लिखो। मैंने यहाँ एक आपको एक क्या है, हु कैन सी दिस पार्टिसिपेंट एनेबल टू क्लोजिंग कैप्शनिंग, क्या है? बंद कर रहा हूँ। ओके, मैं पेरेंट्स की कॉमन मेथड पहले दिखा रहा हूँ, यहाँ है, और एक चाइल्ड की भी दिखा देता। ओके, सो ये अपडेट करो एग्जिस्टिंग कोड को। गाइस अपन ब्रेक लेना भूल गए। Guys, take a break as well. I know it's almost more than 2 hours for few guys. Guys, take a break. ये अपन और 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, बट आपको ये लिखना है कोड। इफ चाइल्ड वांट्स टू एक्सेस पेरेंट का कॉमन मेथड, इज इट पॉसिबल? यस, यस, नॉट टुडे। ओके, महेश, आई विल कवर दिस पार्ट इन डिटेल। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रहे हैं ना, तो
Okay, so even I'm taking break of 10 minute. You guys are going to complete this and you are also going to take the break. Okay, and doubt है तो मुझे बताओ. Okay, चलो see you in next after 10 minute.
Hey, hello everyone. Okay, what if child classes and parent classes located in different package? Okay, child classes and parent classes located in different package. Take this as an assignment. Take this as an assignment. Ideally, everything should work as it is as long as you are using public method. And this remind me that we have one pending concept of क्या था access specifier का. If you remember guys, we said like we will visit this code once we learn the inheritance, and ये pending है अभी भी. We'll complete this as well. Fine. Thanks Meghna, but um, it will work as it is as long as you have public methods, um, and if protected we are gonna see it as well. So I think that will clear most of the things for you, but you can try it out a separate program as well. Fine. Okay. Please open grandchild. Okay sir, grandchild का गया, ये कर दिया ओपन grandchild class. Okay. Actually, I'm not able to see that navigator view is replicated. Okay, on the left side. Yes. Okay, so Windows, Mm-hmm. show view. Can you see navigator over here? No, and in others, Okay, it others, is replicated. others, general, and then navigator. But that is replicated, right? That's fine, but that's fine. They are just saying that you can use package view. The reason is package view is exactly मैचिंग विथ एज पर द जावा पैकेजिंग स्ट्रक्चर. ओके, दिखने में सिर्फ वैसे दिखता है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. एवरीथिंग विल रिमेन सेम. पैकेज व्यू में क्या होता है कि पेरेंट पैकेज हर जगह दिखता है. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट सी एक्सेस स्पेसिफायर में एबीसी पैकेज है, बट इवन सी विल बी डिस्प्लेड एज एक्सेस स्पेसिफायर डॉट सी, एक्सेस स्पेसिफायर डॉट बी. ये वही हो गया है एक्चुअली कि पेरेंट पैकेज चाइल्ड पैकेज, पेरेंट पैकेज चाइल्ड पैकेज. अभी इधर क्या हो रहा है नेविगेटर में, एक्सेस स्पेसिफायर एक ही व्यू दिखाता है, मतलब एज अ पेरेंट, और उसमें एबीसी दिखाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओनली But I'm not able to add that navigator. नहीं आ रहा है यहाँ से. Mhm. शो व्यू से भी नहीं आया. No. उधर ओपन में नहीं आया. No. Okay, then continue with the package explorer. Maybe something with the version that you have downloaded. Mhm. That's fine. That's fine. Let's go ahead with this approach then. Okay. I'm okay with both the approach because it's just the view. It is not going to take part in any type of execution. ये just understanding के लिए आपको आदत हो जाएगी 2-4 दिन में. Okay. Anyone pending with this program? Are we done? अपन ने क्या किया, एक कॉमन मेथड अपन ने तीनों क्लास में लिखी, बट उसका कोड अलग लिखा, मेथड का नाम सेम रखा और कोड अलग रखा. एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्कआउट करता है. ठीक है, लेट इट बी. ओके, इसमें भी एक कॉम्बिनेशन है जो मैं शायद कल कवर करूंगा. ओके, और एक कॉम्बिनेशन है जो आई एम कीपिंग दैट ऑन होल्ड, जस्ट नॉट टू हैव टू कॉम्प्लिकेटेड on a very first day of inheritance. ठीक है, I have got only 3 confirmation. Even I am not sure if you guys have joined the call or not. Okay, again sir. Okay, so now I can say like everybody has joined and everybody has at least tried to complete that assignment or this running this code. Okay, now the next concept is, okay, so ये हो गया एक concept. Now the next concept
What is that concept? It's a Kale inheritance. Hierarchical. Okay. Hierarchy चाहिए. Hierarchy. Let's try to understand hierarchy. Home. Hierarchy. Hierarchy बनाते हैं एक कंट्रोल सेट. एक मिनट सेंटर बताता. एक तो ये हो गया हायरार्की. ओके. हायरार्की में क्या है कि पेरेंट रहेगा एक एक क्लास. ठीक है. ये पेरेंट क्लास. एज आई टोल्ड यू, पेरेंट को ये भी पता नहीं होता कि उसको कितने चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड किया है. दैट्स व्हाई देयर इज change no change in any type of code in parent class. Okay, so method 1, method 2. ओके, ये मेथड 2 है. इसमें लिखी मेथड 3, मेथड 4. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मेथड 5, मेथड 6. ठीक है, सिंपल. मैंने क्या किया, एक पेरेंट बनाया और उसके 2 चाइल्ड बनाए. ओके, सो this particular concept is called as hierarchical inheritance. Okay, तो बस इतना ही नहीं, आप कोई भी हायरार्की को कनेक्ट कर सकते हो. ओके, ठीक है. ये भी क्लास हो सकता है, ये भी क्लास हो सकता है, ये भी क्लास हो सकता है. हाउ? लेट मी रिप्रेजेंट इन, सॉरी, कंट्रोल जेड. ओके, let's try to understand the logic behind this. In short, ये the bottom class can extend this can have the parent. Okay, so ये logically देखो, this single level है, sorry, एक single level, ये multi level हो गया. Multi level, that too couple of multi level in the same hierarchy, that will create the hierarchical ultimately. So method 1 2 parent में है, तो can anybody tell me what will be the how many method which we can access with object B? यहाँ कौन से मेथड एक्सेस कर पाएंगे यहाँ? Can you tell me which all method we can access with object B as per this logic? Method 1, 2, 3, 4. Okay, everybody on the same page? Okay, so guys, you already understood the basics of inheritance then, because I see all the answer this time same. Okay, then what will happen with the C? Ultimately 1 2 5 6. Are you agree with me? 1 2 5 6, we won't be able to access method B method present in B. सब agree है? कुछ doubt? Okay, so simple. ये ऊपर के method इसको भी available रहेंगे, and the same will be applicable for C class as well. C class will be able to access all the method written in C and written in A. Similarly, even if I have class D, E or F, okay, they will access their own method and their parent and then parent. Clear? Clear? Okay, so now this time what we are going to do, I'm not going to stop you this time to watch my screen, to observe my screen. I would say, if you want, you can go ahead and write
write your own code to understand the hierarchical inheritance. So what I'm going to do, see, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लासेस कैसे बना रहा हूँ, ये मैं बंद कर रहा हूँ सारी क्लासेस में, एक कंट्रोल से, ओके, इनहेरिटेंस न्यू, न्यू क्लास, यहाँ क्या लिखता पता है, ये लिखता B24 अपना पहले तो, B24 माय पेरेंट ए, ए करता, ओके, समझने के लिए, ओके, फिनिश ए मतलब पेरेंट ए हो गया, और नीचे A1 A2 करता, ये हो गया। इसमें एक मेथड लिखता, सेम मेथड लिखता, जस्ट टू अवॉइड वन दैट, आप you can start writing your own code if you are confident. I am not stopping you. You can try to implement the same code. Only thing is मैंने एक parent बनाया, my parent A, और child में क्या बनाऊंगा, A1 और A2, okay? That's the only thing. Naming convention में वो follow कर रहा हूँ, आपको जो करना है I will not stop you. New class, ये child है मेरा A1, finish, okay. My parent child A1 में जाता। गाइस नेमिंग ऐसे दो कि आपको समझे। मैं गलत, चाइल्ड, चाइल्ड A1, चाइल्ड A1, ओके, पुराने वाले क्लास डिलीट करता, ग्रैंड चाइल्ड पेरेंट क्लास, देखो मैंने क्या लिखा, एक पेरेंट ए लिखा, उसका चाइल्ड लिखने वाला हूँ चाइल्ड A1 एक्सटेंड्स B24 माय पेरेंट ए, ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा क्लास, और एक लिखना है मुझे चाइल्ड वाला, A2, A2 क्लास, ओके, फिनिश, A1 A2 करके मैंने क्लास लिखा है, चाइल्ड A1 A1, फाइव, फाइव A2 6 2 6, okay, so I created one parent A, उसके बाद child A1, child A2, okay, you can give ABCD name as well, whatever, what as per your choice, only thing is you should able to understand what you are giving. अभी मैं एक टेस्ट क्लास बना था, ये टेस्ट करते सब, obviously if it's a test class we'll make sure that, okay, ये क्या हो गया, if it's a test class we'll make sure that it is having a main method, test class, okay, so let's go one by one, let's go one by one. B24 child, ओके, मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया क्या, एक्सटेंड B24,
current है. P24. My child A1. OBJ A1 is equal to new. बहुत सारे सिंटैक्टिकली आपको और या फिर कॉपी पे सोच समझ के करना. P24. My child A2. OBJ A2 is equal to new. Now you can observe the behavior by accessing those methods if you have written the correct code. Obj A1 dot, you can access method from parent and your own method. Method 1 obj A1 dot method to ultimate 3 and 4. The same will be applicable here as well. Method 1 to 5 and 6. Done. I am done with the basic code which will demonstrate that how hierarchical inheritance works in Java. Okay, try to complete this code. देखो मैंने ट्राई किया, मैक्सिमम कोड आपको दिखे, सिर्फ पेरेंट का नहीं दिख रहा होगा, बाकी सारा कोड आपको दिख रहा होगा. सो अटेंडेंस कौन कौन है आज? विक्रांत, सुरुचि, सुरभि, सुरभि, सुप्रिया, सौरभ, श्रुति, रजत, राधिका, प्रसाद, प्रद्युम्न, मेघना, महेश, ललिता, जयेश, प्रिया एंड अर्चना. ओके, कौन मिसिंग है यार आज?
Okay, I see one. Is there preference recommendation for which inheritance to use between multi-level inheritance and multiple inheritance? To be honest, multiple inheritance is not supported in Java. Only hierarchic, multi-level and multiple and hierarchical are the different thing, or it depends upon what we are trying to achieve. Correct. It actually depends on what you are trying to achieve. Okay. And we only support single level, multi-level. Obviously, these are the simplest form, straightforward form, and hierarchical. And multiple inheritance is not supported in Java. However, multiple inheritance will be achieved in Java by some other way, and that other way is interfaces. And interfaces we don't know today, and we'll learn the interface, and then I will try to say like how this can be achieved. Okay, and that's what like my last topic of discussion for today is that multiple level inheritance. What is the problem? Why Java don't support it? Prasad. Sure. Okay, so anyone pending with this code of this is a code of hierarchical inheritance? Anyone pending, or are you done with code? That is the good question actually. 2 minutes, take your time, Lalita, no problem. Take your time, no problem. Just try to complete.
I think we can move. Jayesh, are you done? Jayesh, are you done? My parent, please open my parent A. This is My parent A. Okay, so my parent A is opened actually. This okay. one. Test. Test Test one. one. Okay, okay, test one. If you want, I can ping this as well. Okay. Okay, so just to avoid the typing. Yes. Let me know once you're done. Jay, shall we move? Yes, sir. Okay. Okay. So guys, these are the few basic behavior which we have learned. Okay. Um, Now let's see one of the challenging scenario that we have. Okay. Can we, can a child access to parent? This is what I'm going to discuss now. That's what my next topic is. Okay. So I'm just erasing this. Don't say. Okay. In C++, we can have something like this. Okay. In C++, by the way, I am not good at C++ and never worked, but this is what I know. Okay. So in C++, you can have two parent and one child. Okay. Now let's try to see the same behavior in Java. Okay. I'm just doing the same thing. Okay. Okay. So method one. Okay. Method one. इधर मैं नाम लिखता अनिल प्रिंट कर रहे हैं the meaning of this is I'm just printing method 2 महेश ये नाम प्रिंट कर रहा हूँ इस दो मेथड में एक क्लास ऑब्वियसली क्लास ए है ये बी है और यहाँ एक क्लास लिखना है अपने को जो होगा चाइल्ड क्लास एंड दिस इज योर हायरार्की जावा की बात कर रहे हैं आप जावा मतलब ये C++ में है ऐसा एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जावा एंड दिस इज योर child class with C. Okay. Now let's try to understand. This is the interview questions, by the way. All junior guys, fresher and junior guys having 1-2 years of experience. Okay. Method 3. Prasad. Okay. And method, I'm writing one duplicate method. Not duplicate, obviously. Here I'm writing Magna. Okay. Now you are going to answer my few questions. Okay, the first question is with the object of class B.
how many method I can access and which are those? One and three. Two method, 3 and 1. Okay. Everyone agree? Okay. Fine. Fine. I hope everyone is agree with the answers because all answers are same. 3131 कुछ difference है क्या नहीं है? ठीक है. Next question. With the okay, so मैं यहाँ लिख लेता. One method one, method one, method three. ठीक है. With the help of object A वाला class वाला object. How many method I can access? Obviously method same answer रहेगा. Method one और dot method same मतलब सेम तरीके से सेम बिहेवियर से मेथड टू. सो यहाँ होगा अनिल और महेश प्रिंट होगा और यहाँ होगा प्रसाद और मेघना प्रिंट होगा. ओके. नाउ दिस इज माय सी क्लास एंड सी क्लास सी क्लास हैविंग मेथड 1 2 3 4 5 करते चलो 5 4 करो क्या 4 में प्रिंट कर रहे हैं अपन सुरुचि. ओके. एंड मेथड 5 इसमें प्रिंट कर रहे हैं सुरभि. ओके. नाउ टेल मी with the object of C. Okay, you can chat channel open karta, give me some time. Okay, with the object of C, how many method I can access and which are those? Please repeat the question. With the object of C, किधर लिखोगे? With the object of C, how many method I can access and which are those? Method 4, method 5, method 3, method 2, 3, 4, 5. Okay, महेश मेथड 1 मिस किया क्या? ओके. मतलब टाइपिंग है या इंटेंशनल है? नो. ओके, इंटेंशनल है आई बिलीव. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 5 1 3 1 from A 1 from B. Okay, very interesting question, a very interesting answer. Method 1 from A, method 1 from B. Okay, method 3 from B, 1 from B. कॉम्प्लिकेटेड. मुझे समझने दो. 3 from B मतलब 1 और 3 उधर से और A से A मेथड 1 और B से 4 5. ओके, आई गॉट योर आंसर अर्चना. उसके बाद जयेश 4 5, ललिता 4 5. ओके guys, we have inheritance, right? So first of all we are going to access parent method as per the inheritance logic that we have. 1 from 4, 1 from 5. Okay. Okay, so guys, you know what happens? Virtually Java always make sure that or behave like these methods are virtually present inside this class. That's why we are able to access with this object. मतलब ये क्या होता है, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअली यहाँ ऊपर का मेथड 1 2 3 1 यहाँ वर्चुअली प्रेजेंट होते जो दिखते नहीं. सिर्फ ऐसा एज्यूम करो बोल रहा हूँ. ऑब्वियसली वैसा ही है, सिर्फ वो उसका तरीका अलग है. माय पॉइंट इज एक क्लास में मेथड सेम हो सकते हैं क्या? सेम हो सकते क्या? नो. मेथड का नाम सेम नहीं हो सकती. इंप्लीमेंटेशन आप बोलोगे इंटरनल कोड अलग रखते, तो ऑलरेडी लिखा है यहाँ मेघना है और यहाँ अनिल है. ओके, तो
जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे तो एक ही मेथड रखनी है, ऊपर से मुझे दो मेथड आए हैं जिनके नाम सेम है। उस मेथड का नाम है मेथड वन, इधर से भी आया, ओके, इधर से भी फ्लो हुआ है। एक मिनट में ये लेता, चैट चैनल, मुझे चैट चैनल चाहिए बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट यू आर सीइंग। ओके, हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये मेथड वर्चुअली यहाँ आई है, ओके, और ये भी मेथड आई है। नाउ द थिंग इज बोथ मेथड्स आर सेम। जावा बोलता है मैं तो उन दोनों में से एक को ही रखूंगा, जो पहले आई उसको नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो अच्छी लग रही है उसको नहीं, जो कोड कम है उसको नहीं, जिसमें कोड ज्यादा है उसको नो। जावा सेज आई एम नॉट अलाउिंग to have one method with the same name in the same class. Duplicate methods are not allowed. Even if they have the different implementation, I am not even going to check if they have the code or not. I will simply not allow to. ऐसा क्यों किया जावा ने? ये तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, ओके। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू द इनहेरिटेंस में ये वर्चुअली मेथड यहाँ सारे होते ही है, ओके। ये बचा था, ये भी चारों आ गए ऊपर के, ये लॉजिकली यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस होते हैं, ओके। Now the thing is, since method name is same, Java get confused. There is a misleading behavior as per the Java concept of duplicate method name. Java unable to identify which method to call. So to avoid this confusion, Java decided that Java is not going to allow this particular type of inheritance, and that's why this is called as multiple inheritance. क्या लिखा है? Multiple inheritance. That's why I'm saying multiple inheritance is not supported in Java to avoid the compiler confusion to which method to be called. Clear? Clear? That's why ये inheritance allowed ही नहीं है. Okay, this inheritance is not supported in Java. Ulta hierarchical support. Can two class have same method name? हाँ. No, 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 no. Method name. हाँ, but उसके लिए एक कंसेप्ट हमने अब भी पढ़ा था, उसके लिए गाइस कैन समवन आंसर? मेथड नेम सेम तो हो सकता है, बट किस केस में? हाँ, बट वो पैरामीटर बताओ मुझे, लिखा है अपन ने अपने कोड में, करेक्ट। मुझे वो तीन चीजें सुननी है जो अपन ने कोड में लिखी है। Number of parameters. करेक्ट, नेक्स्ट। नंबर ऑफ पैरामीटर एक हो गया, Sequence of parameter. ओके। एक मिनट, क्वेश्चन अलग है। कैन No, टू no, क्लास the हैव सेम question मेथड? is डिफरेंट। टू क्लासेस हैव सेम मेथड? यस, यू कैन। आंसर इज यस। अपन ने, सॉरी गाइस, इट्स my bad, I thought like in one class two different class can have same method. Yes, because these are different entity. Method overloading was something same class, even can have the same name, but we need some attributes to be changed. Okay, so ये in, okay, question क्या आएगा कि what are the different types of inheritance supported by Java? बोलने का सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा हाउ अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। दैट विल बी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा व्हाई? तुरंत ये ब्लॉक डायग्राम निकालने की, उसको बोलना कि अभी ये ऑब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा, अनिल प्रिंट करे या मेघना प्रिंट करे, एंड टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन जावा डिसाइडेड टू not support such a type of inheritance. Okay, that will be the misleading output. Are you sure? Obviously, guys, can you see my screen?
Everybody. So Archana, something at your end. Yes, we can see the screen. Okay, obviously sharing. So Archana, something maybe some I will drop and join. ठीक है. Okay. So ये ब्लॉक डायग्राम निकालने की इंटरव्यूअर को ये सब समझाने का क्या कंफ्यूजन होगा. ओके. किसका ऑब्जेक्ट बनाने पे क्या कंफ्यूजन होगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉट सपोर्टेड. बिलीव मी, इंटरव्यूअर इज नॉट गोइंग टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन एटलीस्ट ऑन दिस टॉपिक. क्यों? क्योंकि ही विल अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी मच थरो इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम. ये आपको कोड करके ट्राई करेगा. ओके, सबको सब ट्राई करते हैं और वो कहाँ फेल होता है कोड मुझे बताना. ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग. Try to implement the same thing with the code and let me know where you actually face the problem and ping that problem onto the chat channel. जावा कहाँ रोक रहा है आपको. ये सपोर्टेड नहीं मतलब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है. इज इट लाइक कंपाइलेशन प्रॉब्लम, रन टाइम प्रॉब्लम और कोडिंग प्रॉब्लम, सिंटैक्स प्रॉब्लम. कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है. कैन यू ट्राई दिस. कैन यू ट्राई दिस. आई होप एवरीबडी इज ट्राइंग. लेट्स इम्प्लीमेंट दिस. मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा ऑब्वियसली, बट आपके बाद, क्योंकि यू आर जस्ट ट्राइंग. ये सेम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो. सब कुछ आपको पता है. आपको मेथड लिखना पता है, आपको क्लास लिखना पता है, आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पता है. चलो ट्राई करो और मुझे बताना पक्का कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हाइल डूइंग सच अ टाइप ऑफ कोड. मल्टीपल इनहेरिटेंस पैरेंट ए, मल्टीपल इनहेरिटेंस पैरेंट बी. ऐसा लिखो कोड कुछ तो जो आपको भी समझे. So guys, remember 3 week back, 3 week back, you were not able to write syntactically correct class. In 3 week, you started writing your own code to justify the behavior of Java. Okay, you are demonstrating Java's behavior is working or not, or how it works. Okay, on your own. That's like the improvement that we have done in 3 weeks. Only 3 weeks. Can you imagine 3 months? And after that, maybe couple of months to study. You will be expert. Only you need to spend time. That's the only solution. Spend time. And 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है. बोथ थिंग्स कैन बी इक्वल if you are spending quite some time as well as you are trying different thing, so that you are learning the same thing which is learned by 3 years of experience guy. Okay, so बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. इंटरव्यूज, देन किसका सीवी कैसे बनना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना है इंटरव्यू में, कैसे जस्टिफाई करना है कि आपको सच में इतना एक्सपीरियंस है. ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो रहेगा, बट आपको ऑन पेपर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा. राइट, नॉलेज तो रहने वाला है. इवन वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न, आपके कलीग्स को भी उतना पता नहीं होगा. बहुत सारी चीजें. कोई सेलेनियम पे काम कर रहे हैं, 8 साल सेलेनियम, 10 साल सेलेनियम पे काम कर रहे हैं, बट ही और शी हैज नेवर डन एनीथिंग on
API automation, Jenkins, obviously you will have an edge. API automation, it's very hot in market. Then Jenkins, CI/CD pipeline क्या होती है? Simple सी चीज. Scheduler क्या होता है? Jenkins में. It's a small, quick DevOps for automation. Report generation, something different, na? So you are going to override that knowledge of Selenium guy. Okay, nobody pinged me yet. What problem you are facing? Okay, syntax error. Okay, so क्या क्या लिखा है देखते हैं. It will allow use of extend keyword only once. Okay, after extends only one class name can be mentioned. Syntax correct. जावा ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया उधर ही. बराबर. प्रसाद, मेघना, प्रद्युम एंड कौन है? मेघना, महेश. Okay, so Java stopped you to extend two classes, and this is where Java decided not to support multiple inheritance. Everybody is clear? Everybody is clear with this? Can't allow create two classes. Allow create नहीं, extend होगा सुरभि. Okay, so maybe आपका typo होगा, extend होना चाहिए. Can't allow extend two classes. Correct. यही मुझे बताना था. Okay, for those who are still doing, let me explain you in quickly. Let me explain you quickly. You cannot extend two classes. Okay, B24, B24 कुछ होगा ही नहीं यहाँ. क्यों? क्योंकि you won't be able to. यहाँ भी दूसरा syntax try करते extends. Okay, B24. Okay, it's not allowed itself. Okay, it's not allowed. Syntax error आता है. देखा? So you won't be able to extend two classes, and this is where Java are restricting you to have multiple inheritance. Any doubt so far? Any doubt so far? All good ना? All good? चलो डाउट है तो पिंग कर दो चैट चैनल. ओके, सो इंटरव्यू में याद रहेगा ये क्वेश्चन. ओके, सो इंटरव्यू में पूछते क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन इनहेरिटेंस वाले, इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ के बंदा चेक करेगा आपको कि आपका ओवरऑल नॉलेज कैसा है. बिलीव मी, अगर आपने इनहेरिटेंस के 100 आउट ऑफ 100 आंसर दिए ना, इंटरव्यू हमेशा जावा से चालू होगा. अगर 100 आउट ऑफ 100 आंसर दिए क्वेश्चंस के, मतलब जितना भी पूछा उतना सब कुछ आंसर किया, एंड दैट टू विथ कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस है आपके पास और एकदम श्योर है. बिलीव मी, आपकी जावा के इंटरव्यू पहले 10-15 मिनट में खत्म हो गए. वो बोलेगा चलो सेलेनियम बताओ अभी, बिकॉज ही विल ट्राई टू एक्सप्लोर यू
इन डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. उसके बाद वो पूछेगा फ्रेमवर्क बताओ, उसके बाद बोलेगा एपीआई ऑटोमेशन बताओ. ओके, so you need to make sure that whatever you are speaking, you are very confident and you are to the mark. मैं ब्लॉक डायग्राम जैसे निकालता हूँ ना, वैसे ब्लॉक डायग्राम निकाल के बताने का पेपर पे इंटरव्यू में. ओके, इट वर्क्स एक्चुअली, because by that way sometimes we fail to explain in words. We in words what happens generally, we fail, or the words are so scrambled, interviewer won't understand what we are speaking. Okay, he just ignore your all the theory and he again ask you, okay, what do you mean by that? Okay, better take a pen and paper, or if you are doing online interview, open notepad and just explain him very quickly. It works. It works because he understand the thing what you are saying. Okay, so guys, so that's all about the single page slide. ये slide अपन ने आज देखी. Okay, single multi level hierarchical. कल क्या देखने वाले हैं? कल हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे कि इसमें मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग. मेथड ओवरलोडिंग देखा क्या अपन ने? शायद देखा, ऑलरेडी देखा है, या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा, सॉरी गाइस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा है. और ये कंसेप्ट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. मेथड ओवरराइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं. दिस अगेन बिलोंग्स टू इनहेरिटेंस. ठीक है, तो कल इसके लिए एक फुल्ली डिमॉन्स्ट्रेशन वाला एक प्रोग्राम लिखेंगे. हाउ दिस ओवरलोडिंग, रेफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स in terms of inheritance and usage of methods using inheritance. ओके, ये कल अपन चेक करते हैं. ठीक है, आज के लिए आई विल स्टॉप हियर, बट आई वांट मेघना एंड सुरुचि to stay on call even after closing this session. If anybody wants to continue, because I'm just going to discuss with these two new joiners how much they are comfortable today, and if I need to do any quick session tomorrow morning, early morning, or maybe later in a day today. Okay, so that's what, like, I'm going to talk with these two girls. Other guys, if you want, you can join that session as well as you can stay on the call as well. I don't mind, but if you are done with this, you are good to drop off. Fine. Okay, so I'm just saying uh, thank you for joining the call. If you want to drop off, you can drop off. Suruchi, Meghna, please stay on the call. Okay. ओके, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं, कोई बात नहीं. Okay, so yeah, see you tomorrow. Bye bye. Suruchi and Meghna, so like how was your experience, today's experience, and how are you feeling now? I would like to hear. Yes, Anil. Like I can say I have understand like 50-60% Okay, today's fine, session. fine. It's Yeah. just a first session. Okay. Yeah. And Meghna, I see like you completed the program, I see, and you asked the questions as well. So Meghna ने drop Yes, off कर लिया. I'm okay with Java, but still struggling with the new version of Eclipse. Like I was not aware that hierarchical view is there for. That's fine. That's fine. If you want, you can share your screen, and maybe we can solve those problem immediately. Yes, yes. Okay. I'm stopping my screen share. Just share your screen. Let's see. Let's see what challenges you are facing. I have stopped my screen share. So here, I have created a separate package inheritance, and there is नहीं, अभी share नहीं हुआ screen. स्क्रीन शेयर. ओके, हाँ दिख रहा है मुझे स्क्रीन.
यू हैव क्रिएटेड बेसिक. ओके, इनहेरिटेंस को एक्सपांड करो. ओके, इनहेरिटेंस उप्स कंसेप्ट में चाहिए था, राइट? ऐसा बोल रहे, राइट आप? Yes, and I'm not ओके able to drag it here. ओके ओके. आपको वो विंडोज में जाओ तो अपन नेविगेटर व्यू देखते हैं, वो करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, आप भी कर लेंगे. शो व्यू और नेविगेटर नहीं होता है ना ओपन. Because it is deactivated like this outline. ओके ओके, ठीक है ठीक है. ओके नाउ Oh, navigator, it came here. ओके, नहीं वही वो आया है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो प्रोजेक्ट के एक्सप्लोरर के बाजू में. Oh, हाँ आ गया है. okay. अभी क्या करें कि वो नीचे वाला इनहेरिटेंस उप्स कंसेप्ट वाला डिलीट कर दो फोल्डर. हाँ डिलीट कर दो. ओके, और ड्रैग एंड ड्रॉप करो वो इनहेरिटेंस उप्स में. हो गया सॉल्व प्रॉब्लम. ओके, अभी क्या करना है, उसको एक्सपांड करो. सारे कंपाइलेशन एरर आ रहा होगा. कोई भी क्लास ओपन करो. ओके, तो इसमें क्या करना है, ऊपर जाओ. वो इनहेरिटेंस जो दिख रहा है ना, वो लाइन नंबर 1 एरर, लाइन नंबर 1 एरर कोड में. Okay. माउस और करो उसको. ओके, दूसरा लाइन नंबर कोड, कोड पे हो रहा है, माउस और करो कोड पे, कोड पे. हाँ, इनहेरिटेंस वर्ड है ना जो लाइन नंबर 1 पे. Hmm. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1. हाँ ओके. मूव, मूव चाइल्ड का. और नहीं 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 नहीं, अरे पढ़ने भी नहीं दिया, रुको. कंट्रोल जेड, और उसने नया ये बना दिया था. Now it ओके has हाँ हो गया, started. हाँ करेक्ट, अभी हो गया. तो ऐसे एक एक करना पड़ेगा. और एक चीज, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करो. कुछ नहीं हुआ. कंट्रोल शिफ्ट एफ फिर से एक बार करो. नहीं हुआ कुछ. हाँ ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट एफ का मीनिंग होता है फॉर्मेट करता है वो Formatting. कोड. हाँ, तो आपको कोड थोड़ा रीडेबल हो जाता है. ठीक है, तो बाकी सारे क्लासेस को वो करना Readable. पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट. वो पैकेज का So नाम है ना. in package now, what is the पैकेज में भी हो गया कन्वर्ट. oh, ओके ठीक है. जस्ट अ मैटर ऑफ couple of days. okay, it's a very simple tool. ये हो गया एकदम बेसिक. ओके, अभी आपको कोड कहाँ लिखना है, बेसिक्स. अभी मैं ना सुरभि सुरभि नहीं, सुरुचि. सुरुचि, डू यू हैव टाइम नाउ? डू यू नो बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? मतलब लॉन्ग बैक. लॉन्ग बैक छोड़ो, हाँ. मैं कवर करता है. एक कोड लिख के देता है एक सिंपल सा, कि हम क्या वो टेस्ट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, मेन मेथड क्या होता है. मैं एक बेसिक, मेघना, डू यू हैव सम टाइम, 10 मिनट, 10-15 मिनट? yes, of course. Okay, so let's have it. Okay, so maybe you can stop your screen share. क्या हुआ? Anil, I have one doubt regarding this शेयर code करो one. स्क्रीन, शेयर Yeah. करो स्क्रीन, अगर कुछ शेयर कर सकते हो तो. Just a minute. Okay. See here. Here this method 5 6 should be there, but means I'm not getting that option. See एक मिनट, here. पहले तो सारे कोड सेव करो. पहले वो मल्टी वाला, नहीं नहीं, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला. करेक्ट, सेव करो उसको. हाँ, अब एक्सेस करो, वहाँ एक्सेस हो रही है देखो. Just a minute. See, here you can see like in class C, I have created these two methods, right? 5 and 6. So when I'm calling this, I'm not getting that. I'm getting only 3 4. देखो ना, करो Like, करो ओबीजे डॉट. so I didn't understand like what Okay, I have no done you wrong. try to access those method. अभी मुझे दिखाओ. Which one? You said na, you are unable to access which हाँ method? हाँ. 5 and 6 na? 5 and 6, yeah. And 5 and 6 written in which class? Class C, right? चलो Here. क्लास में जाते हैं. पब्लिक एक्सटेंड पेरेंट. ओके, एक काम करते हैं पहले. वो डबल एरो का एक आइकॉन है ना, वो क्लिक करो. तो एक मिनट, लेफ्ट पैनल पे, लेफ्ट पैनल पे, हाँ वो डबल एरो है, देखो ऊपर जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा और ऊपर. वो पैनल पे पैकेज एक्सप्लोरर के लाइन में राइट साइड है. और राइट और डबल, हाँ करेक्ट, उसको क्लिक करो. This one? हाँ Okay. ओके. सो नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू, क्योंकि वही लेफ्ट साइड पे हाईलाइट होता है, जो ओपन है वो लेफ्ट साइड पे हाईलाइट भी होता है. ओके, यू आर सेइंग आई हैव चाइल्ड क्लास सी.
चाइल्ड क्लास सी, एक्सटेंड पेरेंट क्लास ए, 5 6 मेथड। ओके ठीक है। ओके नाउ आपका इसका टेस्ट क्लास का है? Parent test class, this one. हाँ. Child class C, and you're saying child class C, you are not able to, okay, you have to access with obj2. आपने 15 लाइन पे भी obj2 करना है। Okay, yeah. करो तो अच्छा. अभी Sort. उसके नीचे वाले पे में करो पहले। 3 और 4 एक्सेस नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, I got it. हाँ 5th और ये देखो वहाँ वो लाइन भी पढ़ने का ट्राई करो। हाँ वो लाइन नीचे Yeah. कि कौन से क्लास से कौन आ रहा है। देखो राइट साइड जाओगे तो चाइल्ड क्लास सी से Yes, मेथड 5 आ रही है, करेक्ट। और वो 3 that's all. मेथड नहीं एक्सेसिबल मैं हो गए 2 सॉल्व। नंबर लिखना भूल गई थी. Okay. हाँ आई थिंक यू ऑलरेडी नो लाइक बेसिक थिंग्स अबाउट ऑब्जेक्ट इन क्लास, राइट? हाँ, मतलब हाँ थोड़ा रिकॉल करना है, दैट आई कैन आल्सो डू, मतलब थोड़ा आज पढ़ लूंगी तो ओके सो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. आई वुड सजेस्ट जस्ट लिसन लास्ट 3 सेशन मैक्स। हाँ ओके हाँ. बाकी आप या. लोगों को ऑलरेडी आता है यार। हाँ. ओके सो क्या करते हैं, ये देखो आज का दिन है और कल का दिन है। मेघना और सुरुचि, अ, आज जितना रिकॉर्डिंग आप सुन पाओगे उतना ट्राई करो। ओके एंड टुमारो फिर भी 8:20 को ही 8:15 को ही मैं लॉग इन कर लूंगा, मे बी 8:10 को ही कर लूंगा। ओके वी विल गेट अनदर 20-30 मिनट कल सुबह। ओके एंड आफ्टर क्लास वी कैन अगेन कंटिन्यू whatever the doubt that you have for the session that you have attended through recording। चलेगा ऐसा? यस. है ना? मतलब आज क्योंकि ये देखो लास्ट 5 दिन तो वर्किंग डे था तो यू गाइज वेर आल्सो बिजी। तो आज अगर आपको टाइम मिला तो 2-3 रिकॉर्डिंग अटेंड कर लो बस। ठीक है चलेगा ऐसा? और फिर कल अपन एक्स्ट्रा सेशन भी लेने के लिए मैं तैयार हूँ आपका। या. सो अनिल, लाइक क्या थिंग्स हमारे क्लियर रहने चाहिए, लाइक कैन यू टेल मी, लाइक आई विल गो थ्रू दैट फर्स्ट. हाँ मैं शेयर करता स्क्रीन। ओके बस 2 स्लाइड सीखने आपको अच्छे से। ओके कहाँ गया स्क्रीन शेयर कंप्लीट स्क्रीन। ओके सो आपको 3 स्लाइड ओके आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस. ओके लोकल इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। ओके. ओके इसका एक ऑलमोस्ट सेशन होगा, आधा सेशन होगा इसके ऊपर। ओके उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर का एक सेशन होगा। ओके. ओके एंड कंस्ट्रक्टर का एक सेशन होगा। दैट्स इट, 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। बाकी तो मैंने बोला फॉर लूप if else हुए हैं, वो तो जस्ट 5 मिनट का काम है आपको कोड देख के वो चेक करना है जस्ट सिंटैक्टिकली कैसे लिखना है। बट एक्सेस स्पेसिफायर, कंस्ट्रक्टर और वेरिएबल्स, ये 3 स्लाइड आपको देखने हैं। एक्चुअली 3 ही स्लाइड प्रॉपरली कोडिंग के पर्सपेक्टिव से हुए हैं, बाकी तो सब हम कर ही रहे हैं अभी। ओके. ठीक है ठीक है तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ है, ये देखो ये रिकॉर्डिंग छोड़ दो। इफ यू सी दिस इज आवर फर्स्ट रिकॉर्डिंग 7 तारीख की, ये छोड़ दो। ओके 13 तारीख की रिकॉर्डिंग का लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं, मेथड कैसे करते हैं, मेथड क्या होती है आपको चीजें पता है क्योंकि यू हैव द कंप्यूटर बैकग्राउंड। तो एटलीस्ट मेथड वर्ड भी नहीं पता था लोगों को, उनको वेरिएबल पता नहीं तो वेरिएबल क्या होता है। ओके INT I इज इक्वल टू 10 उनको वो भी नहीं पता था, तो इसमें इनिशियली वही हुआ है। एंड हियर 1 2 3 यहाँ वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये 3 टॉपिक हुए हैं जो जावा से रिलेटेड है। तो वो एक बार अगर आप गो थ्रू करोगे और उसका एक एक कोड भी लिखोगे ना, आई थिंक वी आर ऑल सेट। एक एक कोड लिखना है। ओके. और मैंने वो सारा के सारा कोड है ना आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। नेमिंग कन्वेंशन से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा क्या कोड है। बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द सेशन एंड राइट द सेम कोड। फास्ट फॉरवर्ड अगर होगा तो फास्ट फॉरवर्ड में करो। एक्चुअली वी डोंट गेट दैट ऑप्शन, फास्ट फॉरवर्ड. नहीं है क्या?
बट नहीं ठीक है, कभी ब्रेक हुआ तो 10 मिनट का ब्रेक होता है तो आगे कर लो ऐसा करके, ठीक है, या चलेगा। और वैसे मैं हूँ, सुबह जल्दी लॉग इन करो, जो भी प्रोग्राम रन नहीं कर पाए आप वो मुझे दिखाओ, मैं अपन सॉल्व करते हो प्रॉब्लम। 8:10 को मैं लॉग इन कर लूंगा और ओके क्लास के बाद फिर से बैठते हैं, चलेगा। यस ओके, एक एक प्रोग्राम, एक कंस्ट्रक्टर का, एक एक्सेस स्पेसिफायर का और एक वेरिएबल का प्रोग्राम। इफ यू वांट आई कैन कवर इट राइट अवे एज वेल, एटलीस्ट वन वेरिएबल वाला प्रोग्राम इफ यू वांट, No, we चलेगा। can. हाँ, नो विल गो थ्रू द सेशंस एंड इफ find ओके, any difficulty we'll let you know. चलेगा। मेघना, व्हाट अबाउट यू, यू वांट Yes, मी टू कवर? yes, we'll go through the sessions. You will also go through the session, right? Yes, sir. चलेगा फिर, ठीक है, अब सेशन गो थ्रू करो। एंड वैसे मैं अवेलेबल हूँ, पिंक करो, मैं दिन भर आज घर पे हूँ, आपको लगा तो कभी भी मुझे कॉल करके ना अपन अपना जूम सेशन करके आपको बता दूंगा, Yes. Okay. ओके। ओके देन, ऑल गुड देन, सी यू टुमारो देन। Yeah. Anil, I have one question. चलो, Bye-bye. बाय बाय Okay. मेघना, Bye. Hello. सुरुचि। हाँ, यस मेघना। Yeah, I have one question. Can I share my screen? ललिता, इज दिस ललिता? Yes. Yes. या ललिता, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Is it visible? यस, आई कैन सी इट। Yeah. So, uh, in string operation, I have done here trimming the S3 string. But I can see I just put some spaces before and after. But after trimming, before trimming, I check the length of the S3 string, and after also I check the length, but the length is same. So बराबर है ना, nothing is changed. because S3 is having the same value. After line number 18, 19, ओके, एक मिनट काम करो, 18 के बाद एक लाइन डालनी है आपने को, 18 के बाद, ओके। S3 डॉट ट्रिम, S3 डॉट ट्रिम, ट्रिम करो, ओके, सेमीकोलन दो, यहाँ ट्रिम किया अपन ने, राइट? Now you need to store it. Write one variable string S4 is equal to S5 चलेगा, हाँ। एंड S5 की लेंथ करनी है अपने को लाइन नंबर 21 पे, S5 की, बिकॉज यू वेर स्टिल रेफरिंग टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन लाइन नंबर 21 एज वेल। अभी वो ट्रिम होगी और ट्रिम होके कहाँ जाएगी, S5 में रखेंगे उसको, करेक्ट? Okay. रन करो। Yeah. Okay. All good? Yes. ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिम को माउस ओवर करो, ट्रिम पे माउस ओवर किया ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिटर्न कर रहा है कि ट्रिम हुई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है वो, तो अपने को वो वेरिएबल में रखना पड़ेगा, देन वी कैन गो अहेड एंड प्रिंट इट, ओके। ठीक है, ऑल गुड, Yes. ओके देन, चलेगा, क्लोज करो कॉल। Yes. ओके ललिता, चलो बाय बाय।